So we've reached this Friday evening, Friday night, and I'm sure सब लोग का week काफी tough था. But to end this week, we have someone very, Misery. very special. We all are about to get tackled from behind because Pranay joins us. Pranay, कैसा था week यार? We'll talk about football, but क्या किया भाई ये हफ्ता तूने? पूरा हफ्ता क्या किया? कुछ नहीं, बस माँ बाप के पैसों पे पला मैं, उनके टुकड़ों पे जी रहा हूँ मैं. As Lord Puneet has said, जो हमारी बैकस्टेज पे बात हो रही थी, तो बस चाहे वही है. चाहे मेरे माँ बाप को कुछ भी करना पड़े, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे. किस्मत में होगा तो मिलेगा. मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए. सोच निधि, पेप ऐसे शेख के सामने बोल रहा है, मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी. वो रील भेजूंगा. पैसे राइट करके देगा फिर. ये ले 50 मिलियन का एक और डिफेंडर. ओ बाप रे. निधि, हाउ वाज योर वीक? निधि, हाउ वाज योर वीक ब्रो? हेक्टिक मैन. बहुत काम था. अभी भी है, बट अब मैं चिल मोड में आ चुका हूँ. Cheers bro. Cheers to Pranay as well, and cheers to everyone that has tuned in. So welcome everyone, thank you so much for tuning in. हम लोग थोड़ा Pep versus Klopp की rivalry, Liverpool versus Manchester City की rivalry के बारे में बात करेंगे. We've seen some great rivalries, managerial rivalries over the past decade or even more. प्रीमियर लीग में तो हमने देखा है वेंगर, सर एलेक्स फर्गसन, जोजे, सर एलेक्स फर्गसन, जोजे, वेंगर. And even in La Liga, we've seen Pep versus Jose in our recent lifetime. But this is something which is fresh. This is something which is refreshing, Pranay. When we talk about Pep versus Klopp, yaar. So, what do you think of this rivalry? I mean, मेरे लिए तो I think as I would say City fan, मेरे लिए तो काफी ही like I've इससे पहले जो राइवलरी मैंने इससे जो देखी थी, दैट वाज यू नो मैंचीनी फर्ग्यूसन, व्हिच वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट वो जो जितने भी 2-3 सीजन में जितनी भी वो राइवलरी थी, दैट वाज लाइक द पीक व्हेन यू नो ऑल दैट नॉइजी नेबर थिंग हैपेंड, वी वन द लीग एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद आई थिंक उसके बाद कोई ऐसा मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आया, मतलब जब क्लॉप और पेप की राइवलरी, हाँ मार्केट में नया, उसके बाद फिर राइवलरी का एकदम आया कि भाई क्लॉप वर्सेस पेप करके भी है. तो दैट इज समथिंग दैट इज अमेजिंग यार. एंड इससे पहले भी लाइक दे हैड अ हिस्ट्री इन बुंडेसलीगा, जब वेयर आई थिंक क्लॉप हैज अ बेटर रिकॉर्ड अगेंस्ट पेप, और वही यहाँ पे भी कंटिन्यू हुआ, वही हमें देखने को मिला. एंड आई थिंक इट्स अ मॉडर्न डे rivalry, you know, like मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि it's a very modern day rivalry. It's not about like when you think about a rivalry, you think about Jose pushing you know Wenger, then Guardiola and Mourinho again fighting each other. But this is a very very special rivalry, I think, जो अभी हम witness कर रहे हैं, which is just amazing यार. It is not a very typical rivalry, but on the pitch जब दोनों टीमें खेलती है एक दूसरे को for that 90 minutes, when you see that is something जो बहुत ही amazing होता है दोनों के बीच. So for me, I think it is I hope Pep renews his contract as well, and जो ये जितना भी हमने अभी तक देखा है, that goes till 2026, 25, 26, जितना भी दोनों अगर कर सकते हैं तो. Nidhi, so by the way, guys, please get your questions in. Nidhi, whenever he feels apt or जो उसको relatable लगे, वो he'll put it forward, I'm sure. Nidhi, but what comes to mind when we talk about Pep versus Klopp? Is this the new age rivalry like हमारा thumbnail में था? Is this a softer rivalry? Because it gets, because तू जब Pep बोलता है, see, I think Jurgen Klopp is the best manager. Klopp को पूछते हैं, वो बोलता है Pep is the best manager. You know, it's a very different rivalry, isn't it, Nidhi? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार प्योर फुटबॉलिंग राइवलरी है. It does not have any other angles to it. Like, you know, there's not like a lot of tiff between the clubs, और जैसे यूनाइटेड के साथ है कि, you know, but I mean
इंटरेस्टिंगली इनफ यूनाइटेड के साथ इट्स लॉट मोर देन फुटबॉल, सिटीज की राइवलरी है, बट सिटी के साथ वो, मैनचेस्टर सिटी के साथ वो नहीं है, ये प्योर फुटबॉलिंग राइवलरी है. इट्स नॉट लाइक पेप और क्लॉप हैव सम अदर बैगेज कंपेयर्ड टू कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, या दे हैव ऑलवेज स्पोकन वेरी फॉन्डली ऑफ ईच अदर, एंड इट्स लाइक, मतलब जो भी राइवलरी है वो 90 मिनट्स के लिए रहती है फुटबॉल पिच पे. And this is again, I'm talking about the games. Of course, both of them want to win as much as possible, but it is not. This is a pure. मैं कैसे बोलूं, मतलब this is like one example that I always use. It's a bit like Hunt versus Niki Lauda. That kind of rivalry where there is a lot of, I mean, it's not a very I would not like to call it a friendly rivalry. I don't think it is friendly, right? There is because more than काफी enough. shots, yeah, there's काफी हाँ, shots Yeah, between both there are the shots, managers. there are There shots are fired shots. at each other. Yeah. हाँ, and there is a lot of competitiveness, but I would call it is not like a, they don't get at each other outside of, when they play each other, or that kind of a thing. तो द हंट वर्सेस निकी लाउडा वाला जो मैंने एग्जांपल बोला, वो परफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, बट आई थिंक देयर इज अ, बोथ ऑफ देम एब्सोल्युटली हेट टू लूज, बट एट द सेम टाइम they understand that there are some advantages and there are things that Pep is better at, there are things that Klopp is better at, that kind of a thing. So respect काफी है. Pranay, Ronaldo ने बोला था कि he would love to take Messi out for lunch or dinner, whatever, if you remember Ballon d'Or ceremony में. Do you think Pep और Klopp already कर रहे रहेंगे ये? हम लोग इधर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि ये मैन सिटी, लिवरपूल, बेस्ट मैनेजर कौन है? And I think because we've seen Pep enjoying a cigar after winning the title, we know Jurgen Klopp smokes. We know Pep drinks, we know Klopp drinks. Do you Yeah. think they actually just chill and party, bro, like behind closed doors? I mean, absolutely यार. और जो भी दोनों के बीच इतने इतने टाइम से हम सुनते भी आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक दे लिटरली डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू ईच अदर, कि मतलब आज दोपहर में क्लॉप ने या पेप ने किसी एक ने स्टेटमेंट दिया, शाम को किसी और का, दूसरे मैनेजर का कॉन्फ्रेंस है, एंड दे आर डायरेक्टली रेफरिंग टू ईच अदर. तो मेरे को लगता है उनका व्हाट्सएप पे तो ऐसे बात चालू रहेगा उनका कि भाई मैं आज ये बोलने वाला हूँ, तो इस पे ये रिप्लाई करने का है. तो I mean, in terms of that, I think both of the managers, and like I said, yeah, in all of the statements that I think even Pep or Klopp have given each other, it's all about giving respect. I know there are few things, of course, क्योंकि तुम कुछ चीजें बोलते हो, जैसे एक चीज जो बहुत फ्यूरियस हो गई थी, which was like Pep referring कि Liverpool is more, it's favored by more English media and all of that. प्रणय, तेरा क्या ओपिनियन है उसमें? It is, यार, it is. It अच्छा, is. okay. So Okay. I agree with my manager, man. I stand behind him for this. ये blind faith या तेरे को genuinely लग रहा है? I mean, after he said it, I somehow feel कि थोड़ा बहुत तो मेरे को लगता है कि बायस रहता है इंग्लिश मीडिया. आई नो कि लिवरपूल फैंस को ऐसा नहीं लगता कि व्हेन आई फॉलो, आई नो अ लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस लाइक यू, निधि, मयूर, में बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो लिवरपूल सपोर्टर्स हैं, वो भी ऐसा कुछ कंटेंट डालते हैं कि लाइक कि लेट्स से रेफरीज को लेके काफी किसी ने लिवरपूल फैंस को लगता है. बट मेरे हिसाब से तो आई थिंक there is certain bias, in the English media about Liverpool. निधि, ये जो पेप ने कमेंट बोला था, वो भी एकदम निधि, आई थिंक हमें ये भी समझना चाहिए, जो पेप ने कमेंट बोला था वो एकदम ही करेक्ट टाइम पे, जब टाइटल रेस का जो की मोमेंट आ रहा था, लाइक देयर आर, पेप भी बहुत स्मार्ट है, ऑफ कोर्स ही इज वेरी स्मार्ट, लाइक ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, राइट निधि, लाइक just to get under our skin as well. देख, honestly, bias in terms of numbers है, and again, this is not me taking a pop at City, but you will find that a lot of things are written about Liverpool, United. These are the two clubs जिनके बारे में सबसे ज्यादा तुमको न्यूज मिलेगी. अभी भी लिवरपूल ने बहुत जगह से इंडिकेट कर दिया है कि हमको, our transfer is done, but you'll still see Bellingham के लिंक्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ फैंस ज्यादा हैं. तो यार, यू राइट अबाउट स्टफ दैट पीपल विल रीड, नो, दैट्स द थिंग. जो पेप ने बोला वो डिफ्लेक्ट कर रहा था,
he was just trying to put a psychological pressure. देखो bias है या नहीं है ये बहुत ही फ्यूटाइल डिस्कशन है. मतलब मैं बैठ के यहाँ पे बोलूंगा कि बायस नहीं है, प्रणय को लगेगा जरूर बायस है, ठीक है, हाँ, ये बट तो चलते ही उससे रहेगा. कुछ, हाँ, हाँ उससे कुछ हाँ, निकलेगा नहीं. बट द रियलिटी ये है कि यू विल राइट अबाउट द क्लब्स दैट विल गेट यू आई बॉल्स. ये मीडिया का रूल है यार, एडवर्टाइजिंग में काम करता हूं मैं अभी तो बर्नली का न्यूज ज्यादा रिपोर्ट करने लगेगा, हु विल रीड इट? एक्सेप्ट फॉर लैंकाशायर में कौन पढ़ेगा बर्नली का न्यूज? मैनचेस्टर सिटी के फैंस अभी बढ़ रहे हैं तो आ रही है उनकी भी न्यूज, बट क्यों लिखते हैं ज्यादा, उसका रीजन ये है. अच्छा. आई थिंक सिटी के मामले में भी आई थिंक इफ यू सी सिटी के मामले में कोई भी अगर न्यूज रिपोर्ट होती है तो इट इज मोर अबाउट कि भाई हमने इतने पैसे खर्च करे, इतनी सैलरी है, जितनी वो सैलरी होती भी नहीं है ज्यादातर, तो कि पता नहीं क्या क्या मिला के बोल देंगे भाई 100 मिलियन हो गया या 70 मिलियन दे दिया, तो वो भी एक हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है. आई थिंक 6 साल के वेज मिला के बोल देंगे कि 100 मिलियन दे हाँ दिया. कि भाई हाँ. एजेंट के 6 साल के वेजेस मिला दिया, वो तो भाई होगी 20-30 मिलियन यार, वो तो किसी भी प्लेयर के निकाल लोगे तो वो होगी. तो आई सर्टेनली अग्री, मतलब आई अग्री टू दैट पॉइंट विच निधि मेंशन कि थोड़ा सा ऑफ कोर्स तुम अगर तुम कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग समथिंग, यू नीड पीपल टू वॉच इट. ऑफ कोर्स बर्नली या फिर अब नॉटिंघम फॉरेस्ट के बारे में अगर कोई लिख रहा होगा तो वहाँ के लोकल के अलावा और कौन लिखेगा? So I think, of course, and Liverpool has a larger fan base. तो उसके बारे में उतनी ज्यादा न्यूज रिपोर्ट होती है. So बट yeah. नॉटिंघम फॉरेस्ट तो यूरोपियन कप जीता है ना ब्रो. just kidding भाई, just no they have, but just kidding in the context of here. But लोग so प्रणय, like एक चीज बहुत लोगों ने डिस्कस की है अबाउट पेप गार्डियोला कि वो ओवरथिंक करते हैं इन बिग गेम्स. Champions League final against Chelsea is one game which comes to my mind. Uh, I don't know whether you agree about the Lyon game behind closed doors, where he played two defensive midfielders. Against Chelsea in the final, he played no defensive midfielder. He played Uh, Sterling instead, and he played yeah. Sterling, So, which didn't even start for the entire campaign. So, मैं एज अ सिटी फैन मैं तेरा ओपिनियन जानना चाहता हूँ सिंस वी टॉकिंग अबाउट पेप. और निधि, मेरे पास एक क्वेश्चन है तेरे लिए अबाउट क्लॉप एज वेल. बट फॉर प्रणय, फॉर यू, डू यू थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, और इट्स जस्ट अ नैरेटिव जो बहुत बिल्डअप हो गया यार? It's a narrative. See, I think it's a narrative. अगर वो चीज वर्क कर जाती तो everyone would have been calling him a genius. Same thing happened with the अब एग्जाम्पल के तौर पे चलो एथलेटिको गेम ले लेते हैं. दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड. एथलेटिको गेम सेकंड लेग, if that would have not worked out for us, then people would have been calling out Pep ki yaar, he didn't play his style, he became too defensive, we lost the game because of him. But he won the game and nobody questioned, and people are calling him, okay yaar, Pep, this is a new side of Pep that we have seen, which nobody has seen before. So I think, see, ठीक है यार, I support Guardiola in terms of everything that he does. I stand behind my manager 100% for whatever he does, because like I mentioned, I've never seen Manchester City play bad, ever, ever. Like I've never seen Manchester City play bad. Errors, ठीक है, कुछ गेम, एक दो गेम्स तुम्हारे हो जाते हैं, बट when I watch other Premier League games, कोई भी सिटी के अलावा कोई भी टीम का मैं देखता हूँ, तो I see a lot of blunders, I see a lot of things, जो कि मेरे को, जब मैं मैन सिटी का गेम देखता हूँ तो I'm very relaxed, I'm very chill. So in terms of that, I think, and just coming back to the question, हाँ, चेल्सी वाले गेम में he might have उसने overthink करा थोड़ा, but I think again it's all part of the plan. If that would have worked out, then हम में से कोई यहाँ पे call out नहीं कर रहा होता पेप को, and we all would have been speaking about his genius. So ठीक है, it's all part of the game. He shouldn't be doing that in a Champions League final, of course, because of course एक grudge तो रहता है कि यार, we, and I know a lot of Chelsea fans will not agree, but I think we deserve to win that campaign. We deserve to win the Champions League that season. But ठीक है, that's in football you never know that जो चीज exist अब हो चुकी है उसको हम बदल नहीं सकते. सिंस हम पेप के बारे में बात कर रहे हैं, निधि तेरे ऊपर फर्स्ट, checkbook manager is a term which is
used for Hmm. Pep at times by Hmm. supporters. मैं कोई एक्सपर्ट एक्स फुटबॉलर को नहीं देखा हूँ ये टर्म यूज करते हुए, Hmm. चेकबुक मैनेजर. प्रणय ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि ही हैज नेवर सीन मैन सिटी प्ले बैडली, एंड प्रणय को मैंने बहुत बार रिपीटेडली बोला है, आई हैव Hmm. नेवर सीन मैन सिटी प्ले बैडली. आई हैव सीन लिवरपूल प्ले बैडली, हाँ, Hmm. against Leicester when we lost last season. We Yes. played pathetic. We were bad. Against Brentford, we defended shit when we drew the Hmm. game. Against West Ham, we were ordinary. Against Yeah. Man City at Anfield in the first half, they ripped us apart. I'm not trying to demean Liverpool. I love Liverpool. Liverpool is a great team. It's one of the best teams in the world. But we have, and over 63 games, it's okay to have 4 bad halves or something. Okay, but Hmm. जब भी हम सिटी को देखते हैं, okay, पेप ने Hmm. जो किया है निधि with this side, sure he gets to sign his players, sure he does, but the way Hmm. he makes them play, Nidhi, it's remarkable, yaar. देख पेप गार्डियोला का जो स्टाइल है ना, और whatever his coaching methods, his instructions, whatever, they are very specialized in nature. And you, तेरे को ना ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनको वो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन समझ में आए और उसको वो लोग कैरी आउट कर सकें एज अ यूनिट. ठीक है. एंड टू हिज क्रेडिट ही एक्सेप्ट्स दैट, राइट. पेप का जो वैसा स्टाइल है कि ही विल से, फॉर एग्जांपल उसका जो फुल बैक होगा या फिर उसका जो डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, देयर विल बी अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि इस गेम में क्या करना है और कैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एडवांटेज लेना है. एंड टू हिज क्रेडिट ही एक्सेप्ट्स दैट दिस इज व्हाट माय स्टाइल इज. वो मेरे घर से, हाँ हाँ, आराम से, कोई नहीं. हाँ, राइट. you want to take that. ठीक है, दैट्स ओके. हाँ, सो yeah. and for to you to get that, you have to spend a certain amount of money to get the exact profile of the player that you want. ठीक है. That is the reason I think, Pep, and and that's why you'll find him at a certain kind of a club where you have that much of wiggle room, that much of freedom to go and get those kind of players. Klopp is a manager who can take a player who is, let's say, 2-3 notches below a world class level, and he can make them play as close as possible to a world class level. This, I think, this is the biggest difference between Pep and Klopp. Checkbook manager is, I don't agree with the term checkbook manager, right? I feel that we have to call a spade a spade. Yes, Pep spends money. There is no two ways about it. He does spend a lot of money, but there is a reason why he's not throwing money randomly, saying, I'll buy big players, I'll buy big names, and it will work. उसका एक रीजन है, उसका एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो फॉलो करना है. क्लॉप इज अ डिफरेंट गाय. क्लॉप बोलेगा कि मैं आई विल गेट अ नॉर्मल प्लेयर टू प्ले एज क्लोज एज पॉसिबल टू अ वर्ल्ड क्लास लेवल, एंड दैट इज व्हाट क्लॉप डज. दैट इज द मेजर डिफरेंस. Pranay, what do you have to फॉर reply to that? I जैसे think जैसे I जैसे yeah, Nidhi, go on. जैसे 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 ये विंडो की बात करें ना, Hmm. Pep would go for a finished product than Fabio Carvalho. रहेगा, he can develop a Fabio Carvalho, He has, right? like, he's He developed has, food in his, he, yeah, yeah, he yeah, has, he has. Even at yeah, Barcelona, he has developed players. yeah. He can develop players. वो मैं नहीं बोल रहा हूँ. But he will go for a player who can come in, slot in, and finish product. Darwin Núñez भी finished product नहीं है. Luis Diaz not a finished product. But Klopp takes them and makes them tick like this. ये difference है. I think but I think इस चीज में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. पेप के मामले में भी ही हैज डन द सेम थिंग. अब मैं ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स का यहाँ पे नाम ले सकता हूँ. चलो अगर इसी ट्रांसफर विंडो के अगर हम नाम ले लें, बिंदास ले. हाँ स्टर्लिंग, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टर्लिंग और हिसुस का है, ठीक है, हाँ. recent examples. After the transfer got confirmed, and okay, chal, let's talk about even not transfers. I used to get a lot of shit
because I have said shit about Sterling isse pehle, not my kind of player. But whatever he has done for the club, I respect him. But again, like how like how Arsenal fans treated Wenger, thank you for the memories, but it's time to go. So it's I have a same stand with Sterling that thank you for the memories, but it's time to go. नहीं नहीं But वैसे अगर कोई बोलना, प्रणय हाँ, वैसे बोलना, वैसे एक बार बोलना. it's time to go. so so आई थिंक अगर स्टर्लिंग की भी बात करें और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स की बात करें हु वर आई नो वी आई मीन वी गॉट स्टर्लिंग फॉर अराउंड 50 million फ्रॉम लिवरपूल ओनली. ठीक है. ही we all know Sterling का level कितना है, but still Pep took out a lot out of him. You know, a lot out of him. I think उसकी capability से ज़्यादा Sterling ने perform करा है. मतलब जितना पेप उससे निकाल पाया है. पेप I think Sterling was just a very regular player. ठीक है. But because he played under Guardiola, he took out the maximum out of him. You know, जितना भी hype अभी Sterling को मिला है इतने सालों से, it is all because of Guardiola. सो इस चीज पे आई वुड एंड सेम विद गैब्रियल हिसूस आल्सो. आई मीन ठीक है उसको उतना चांस नहीं मिला पर यू नो ही वाज द चोजन वन. मतलब उसको ही हम इनिशियली लाए थे व्हेन अग्वेरो वी ऑल न्यू दैट अग्वेरो वाज अबाउट टू गो एंड हिसूस कंटिन्यूड विद अस फॉर 3-4 सीजंस उस चीज में. तो ही न्यू बट वट एवर द वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर जो आज भी गैब्रियल हिसूस है जितना भी वो है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पेप. एंड ये चीज डिफरेंस अगर आप अभी देखोगे, this I can guarantee you and just assure you, just look how they play after they leave City. Like City को leave करने के बाद जो players आप देखोगे, they have not performed the way when they were performing at City. और इसका मैं अगर recent example भी लूं तो जैसे एरिक गार्सिया हो गया, फेरेन टोरेस हो गया, they were performing brilliantly, under मतलब I would not say brilliantly, but they were getting groomed. They were, Torres was starting to becoming, a household name in Premier League. उसको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला. But Ferran after Torres. he Ferran Torres, so after he left the club, like he's not performing well. So ये चीज, this is the exact same thing that you will see, uh, with Sterling and Jesus. I just know, once they have left the club, I don't think so they're gonna be at the very Pranay, similar level Pranay, of. but Pranay, निधि का point of view में he suggested और उसने अपना opinion दिया the difference between Klopp and Pep. तेरे हिसाब से is there a difference? If there's a difference, Pranay, what is that difference? I mean, see, I'll be very deluded if I say it's not about the money. Of course, when we buy a player, we spend a lot of money. Okay, we get a player who's uh because of the investment also. Now, club also, अब हमारे पास उतना investment है, so we are utilizing that. अब FSG हाँ. उतना spend नहीं, अब FSG उतना पैसा नहीं देता, and there are public statement. I think Klopp ने भी बहुत बार बोला है कि he wants to get a certain signing, but because of the money, you guys are not able to do it. ठीक है. इससे पहले भी I think 2019 2020 में मैं 2-3 बार ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा कि Klopp wants to go for, he has to have a bigger ambition and get some bigger player, but he has to settle down with, with everything that he has. तो उस मामले में the only difference that I feel is about the money, because we have the money and it's a privilege for us. I would say कि ठीक है, अगर हमें कोई एक player चाहिए तो हमें वो मिल जाता है, we have that pull. But in terms of Liverpool, you guys need to search out, which I think is playing out well for you instead. कि मतलब तुम लोग अगर 30 million भी spend कर रहे हो लुइस डियाज पे, Is 30 that for is that why Pranay you think that the media has a soft spot for Liverpool? आई मीन ऑफ कोर्स मेरे को लगता है वही एक डिफरेंस है कि बिकॉज आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आप यू वुड बी वेरी मतलब आपका हाथ एकदम वो रहता है कि यार अगर मैं इस जगह पे पैसे डाल रहा हूँ एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट, देन नेक्स्ट टाइम आई कांट गो फॉर अ बिगर थिंग. But with City, it's not like that. Even we got a Grealish for 100 million, but it didn't work out for us. We put him on bench. कि ठीक है, if you're still learning, you will learn in a next season or so. And same चीज I think with Stones के साथ भी अगर देख लो, बहुत सारे ऐसे साइनिंग्स हुई हैं पेप के जो फर्स्ट या सेकंड सीजन में उतना परफॉर्म या उनके प्राइस से सिर्फ जस्टिफाई नहीं हो पाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर सिटी, देन देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर देम. Well said, Pranay. Like, I mean,
I personally, whenever I think of Pep Guardiola, there's immense respect in my eyes when I think of Pep. Obviously, uh, there's I would I wouldn't say dislike or hatred, because because he's the manager of Manchester City, and at the moment that is the only club that is stopping us from winning the title. Nidhi, we've had multiple seasons of 90 plus points if we've not won the league. निधि, ये मैं Hmm. तेरे को पूछा हूँ बहुत बार, आज लाइव पे पूछ रहा हूँ, आर वी अनलकी कि हम लोग का ये जो फाइनेस्ट आर है, एरा है, it is coinciding not with just Manchester City, but Manchester City under Pep. 100%, yeah, 100%. See, the thing is, if you look at Liverpool, uh, independently alone, yeah, this is serial league winning form. आप Yeah. मतलब 38 मैच के, मतलब अगर आप जैसे एनफील्ड पे द लास्ट टाइम वी लॉस्ट वाज इन 2018 और 17 और समथिंग, क्रिस्टल पैलेस से जो हारे थे. नहीं नहीं, ये लीग में हम दिस लोग 6-7 में हारे थे ना, अभी रिसेंटली, बिकॉज बिहाइंड क्लोज हाँ, वो डोर्स. हाँ. क्लोज डोर वाला, सॉरी. हाँ. आई मीन, हाँ. सो विद अ फुल टीम दैट वाज द लास्ट. एवर्टन आई चलो, गेस, हाँ. ठीक है. या एवर्टन से विद अ हारे थे फुल शायद. टीम, हाँ, विद अ फुल टीम दैट वाज द लास्ट टाइम वी लॉस्ट, राइट. These are not, matlab, ye 91 points, 92 points, all these things, these are not usual statistics, right? But abhi, the point is that, and I've said this a lot of times, and I mean this in a nice way. Who are you fighting with? The fucking death star of football, Manchester City, right? Matlab, an endless pot of money, a man who's brilliant with his tactics, right? तो वो तो है ही हमारा बैड लक यार. अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैंने हमेशा बोला है कि यार देखो, यू नो व्हेन वी प्ले मैनचेस्टर सिटी, द ट्रबल, व्हेनेवर वी, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार भी एक एक पॉइंट से हम लोग लीग हारे हैं. हमने नहीं हराया मैन सिटी को. The reality is that when we play them, especially at Anfield, we have to beat them. We didn't. I have always said that Man City are more than happy with, not losing to us. That's their thing, because they will have their little stumbles and we will have our little stumbles, but they will, in the end, have enough. हम लोग कैचअप ही करते रह जाते हैं. वो इशू है मेरे हिसाब से. प्रणय, मैं एक बात जेन्युइनली बोल रहा हूँ इधर कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स ना भाई, whenever Liverpool play, I'm very even when we play Manchester City, I look forward to it, because we're like, come on, we've just upped our game so much under Jurgen Klopp. But there is only one team, we've played multiple finals, we've played multiple big games, बट एक ही टीम से मुझे थोड़ा डर लगता है हमेशा, इज मैनचेस्टर सिटी. Like if we play, even when we lost against Real Madrid in the final, I was like, if we play our game, we should beat them. Yeah, बट yeah. ये फीलिंग मेरे को मैनचेस्टर सिटी के साथ नहीं आता. आई एम थिंकिंग कि इवन इफ वी प्ले वेल, there is a chance we might lose, and it happens. What do you feel when you play against Liverpool? I want to know from your perspective, because I am a nervous I wreck think it's जब a Manchester mutual. City I होते हैं. think it's a mutual feeling, bro. Like I honestly feel it's a mutual feeling. मेरे को और किसी से उतना वाइब नहीं आता, और अभी मतलब रिसेंटली मेरे को बस क्रिस्टल पैलेस से वाइब आता है, बिकॉज हमारा मेरे टॉटनम, आई मेरे को डोंट लगा नो टॉटनम हाउ. बोलेगा तू. मेरे को लगा नहीं टॉटनम नहीं बोलेगा. नहीं, क्रिस्टल पैलेस ब्रो, क्रिस्टल पैलेस से हमने इतने पिछले 2-3 सीजन में पॉइंट्स ड्रॉप करे ना यार, मतलब क्या बताऊं मैं. बट आई मीन ठीक है, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द वो. बट लिवरपूल व्हेन वी स्पेशली प्ले, आई थिंक दैट इज द गेम. यू नो, क्योंकि एक ना मेरे अंदर ये चीज, एंड आई जस्ट से दिस कि मेरे मेमोरी में ना 2 लिवरपूल गेम्स का ना बहुत ज्यादा फ्लैश है. एक जो वो 4-3 हुआ था, द राइट. फेमस 4-3 स्कोर लाइन, ठीक है, वो गेम लिटरली आई थिंक इट वाज वन ऑफ द, आई थिंक मेरे लाइफ का टॉप 10 बेस्ट गेम था वो जो मैंने देखा. द लिवरपूल 4-3 गेम, इट वाज इंटेंस.
एंड टू एंड फुटबॉल दोनों साइड से एकदम, ऑल्दो वी लॉस्ट द गेम बट एंड द गार्डियोला वाज लाइक वी आर गोइंग फॉर इट एंड we could have actually won that game. But that game, if you watch, I mean, it was pure adrenaline rush, मतलब दोनों साइड से. एंड द सेकंड गेम दैट आई रिमेंबर वाज ऑफ कोर्स जो चैंपियंस लीग वाला गोल था, जिसमें 20-30 मिनट में ही 2-3 गोल खा गए थे हम लोग चैंपियंस लीग में. एंड आई वाज लाइक, दैट वाज द गेम दैट एक्चुअली आई वाज लाइक कि ब्रो, दिस इज नॉट द मैन सिटी दैट आई नो. लाइक ऐसा मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा कि यार इतना ज्यादा मेरे को डर लग रहा हो कि भाई, मैं बस ये सोच रहा था कि भाई फुल टाइम तक एक गोल और कंसीड ना कर ले. ऑल्दो हम हाफ टाइम पे वी हेल्ड दैट स्कोर लाइन, बट मेरे को ये था यार कि बस ये गेम किसी तरह निकल जाए. तो लाइक जस्ट हाउ Manas asked, I think that feeling is a very mutual feeling for me, because लिवरपूल जब एक बार गोल मारना चालू करती है ना भाई, तो एंड सेम लाइक सिटी, वंस यू नो दैट एक उनको जब दोनों ही टीम में आई फील की एक फीलिंग आ जाती है ना कि वी कैन एक्चुअली क्रश देम, देन देयर इज एक्चुअली नो स्टॉपिंग टू बोथ ऑफ टीम्स. तो आई थिंक द फीलिंग इज प्रीटी म्यूचुअल. यार देख, मतलब ऑनेस्टली मैन सिटी और लिवरपूल का गेम्स मैंने डल गेम, मतलब 0-0 भी फिनिश हुआ है तो भी मैंने डल गेम मुझे याद नहीं है कि एक भी गेम मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का डल हुआ हो. बट एक क्वेश्चन है यार प्रथमेश का, want to know Pranay's take on the current depth of City. Their defense and goalkeeping department looks a bit shallow. Goalkeeping department really? And defense? तो, हाँ मतलब अभी जैसे ट्रांसफर्स में अगर अब आई वुड से कि अब अगर कुकरेला आ जाता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस. क्योंकि अगर मतलब अभी न्यूज़ काफी ही स्ट्रॉन्ग चल रही है कि नेथन आके वांट्स टू गो टू चेल्सी. आई थिंक 45-50 मिलियन का एवरी डे आई एम रीडिंग द न्यूज़. तो मैं सॉरी प्रणय, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि पब्लिक इतना बोलता है ना कि सिटी स्पेंड मनी, द वे सिटी रिकूपरेट मनी ना इज सो अंडररेटेड. Is so underrated, भाई. 110 Torres, अभी million नेथन for आके Sterling and Jesus, bro. 110 million for those players. भाई तुमने फरान टोरेस के लिए कितना लिया? 55 ना, 45. अभी इसके it is so criminally underrated. I want to give credit where it's due. Sorry Pranay. Yeah. And I mean even आके का भी around 50 million का ही अभी आस्क है जो हम बोल रहे हैं. Yeah. So I think in terms of that is something that ठीक है. अगर अब वही है कि अगर उसमें there will be a lot of, अगर as a viewer देख रहा हूँ तो I would have written ग्रिलिश का क्या है 100 million का, या और भी players जो हमने थोड़े महंगे खरीदे हैं. But I mean in terms of even in the selling business, I think when we sell it at a premium, because of course you are giving a Man City player, and that is the premium that every club pays whenever they are buying our players. तो अगर हम particularly उस चीज के बारे में बात करें, okay, just coming back to that, I think I personally don't want Nathan Ake to leave the club, because ये season बहुत बहुत लंबा होने वाला है भाई. वर्ल्ड कप है, ठीक है. प्लेयर्स और मतलब तुम्हें फिटनेस तो तुम्हें चाहिए, और स्क्वाड डेप्थ तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए. तुम्हें स्टार्टर्स चाहिए एक्चुअली क्लब के लिए. ऐसा कोई प्लेयर नहीं चाहिए तुम्हें जो हु इज नॉट अ स्टार्टर, या तुम उसे इस सीजन में तो उतना ग्रूम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी डिमांडिंग सीजन प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से. सो अगर वो होता है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वरीसम फॉर सिटी अगर नेथन आके लीव करता है. बट आई थिंक अगर कुकरेला इन होता है, then I think we are still pretty much, I would say, balanced out. Manas, भाई मेरा camera is acting up. Can you guys hear me though? Yeah, I can hear you. Yeah, so try कर ले वापस. हाँ मैं वापस try करूँगा, but I wanted to ask this question to both of you all. अच्छा, कट लिए भाई. कोई नहीं. बट यार प्रणय, एक और क्वेश्चन है अबाउट दिस पर्टिकुलर राइवलरी. तूने बोला गेम्स के बारे में, एंड यू टॉक्ड अबाउट सर्टेन गेम्स दैट यू डोंट थिंक दैट व्हाटएवर. बट अगर सिटी की बात करें, नाउ
there are a few departures that are being talked about. Obviously, Sterling के बारे में. How much of a loss do you think Bernardo Silva will be if he leaves? Uh, Because nahi, I बात तो don't हो think रही so. है उसकी जगह. I don't think so. We are selling Silva yaar, at all. I just definitely know Bernardo Silva is not leaving now since Sterling का confirm हो गया है Hmm. leave करना club. So I don't think so. Bernardo Silva at any cost will leave. If he leaves, then I think 100 million से कम तो हम लेने नहीं वाले. वो तो हर जगह न्यूज में है ही कि वी आर कि दैट इज द आस्किंग प्राइस वी हैव. एंड आई डोंट थिंक सो जिस भी क्लब के साथ वो चल रहा है दैट इज इन अ वेरी फाइनेंशियल पोजीशन टू प्ले 100 million when they Hmm. are selling FDJ for 65. So Hmm. I don't think so. Bernardo will leave City, particularly in this season. तो वो बिल्कुल लीव नहीं करेगा. Maybe next Hmm. season, maybe उसके बाद. But I think now since we have confirmed कि City City ने confirm कर दिया Sterling leaving, Bernardo ain't going anywhere, bro. Like, don't think so. Right. And when you talk about this particular season, do you see, मतलब हम लोग आएंगे लिवरपूल के बारे में भी, मानस को भी आने दे, but do you see any more? Let's talk about one of your favorite topics, Erling Haaland. Erling Haaland, अभी वो आ गया है, but you have always said that you have more expectations from Julian Alvarez more than Haaland. But ऐसा क्यों है, थोड़ा हमको बताना. मतलब हम लोग, we have not seen Julian Alvarez. So what have you seen that we Uh, have not? नहीं, I mean, see, in terms of ये मैंने बोला था in terms of only long run, ठीक है. Okay. Haaland, I immediately believe कि it's a if he stays for with us for a long period of time, then of course I'm pretty much happy. But again, like, we are getting a superstar. When a superstar comes in your club, then they bring that aura, that they bring that woe. If he's happy at the club, I have no problem, because at the end of the day, both Alvarez and Haaland are Man City players, and I Hmm. stand behind both of them. बट एक पर्सनल चॉइस रहता है सबका कि अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट सीजन में अगर बहुत सारे people love Salah, but they also love Mane. There are some Liverpool fans who back Mane, because whatever he's done for the club. तो एक फेवरेटिज्म रहता है. It's not a very justified statement बोलना कि भाई for a very particular reason, but I am more tend towards more South American players, because they have done well for us in the past decade. Be it Aguero, the first example, even Gabriel Jesus, I personally love the most. Or and since Alvarez again, Argentina, South American boy coming into city system, I think that is the only way. That is the only reason I stand him as a favorite. As a मैं थोड़ा favoritism है मेरा उसकी तरफ. But of course, I mean, अगर Haaland if he stays with us for a longer period of time, जो कि with contract तो ऐसा नहीं लग रहा. तो that's it. अगर वो रहता है long term के लिए, then I have no problem, man. He stays for 10 years. I'm Hmm. very happy if he's performing. Gabriel Jesus, by the way, has scored on his Arsenal debut. 90 seconds into his Arsenal debut, he scored. Yeah, So, yeah, yeah. मेरे हिसाब से Gabriel Jesus is going to be a great signing for Arsenal. Of course, of course. Uh, I've always been saying that, dude, that Gabriel is. मैं नहीं चाहता था at the very end, but last season it was. I would say कि chance up. I don't know what happened. Why Guardiola didn't play him much. But last season Hmm. अगर Guardiola अगर खेलता उसको, and if उसने थोड़ी सी पोजीशन अपनी स्ट्रेंथन करी होती हिजोस ने, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, जो भी है, देयर आर फ्यू, मतलब वो एक परफेक्ट स्ट्राइकर नहीं है. ही मिसेस अ बिट ऑफ चांस. ही इज नॉट अ वेरी क्लिनिकल, आई वुड से क्लिनिकल फिनिशर नहीं है, जैसा एक तुम्हें फीलिंग आता है जैसे साला अगर 1-on-1 है तो इट्स 100% गोल. केन अगर Right. 1-on-1 पे है तो गोल है. रोनाल्डो इफ इज ऑन 1-on-1, दे आर वेरी क्लिनिकल विद द बॉल. सो एक थोड़ा सा जो डाउट आता है, एंड सेम चीज हालैंड के साथ भी है. लाइक जो भी डॉटमंड के मैंने गेम्स देखे हैं, ही इज वेरी क्लिनिकल. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन probably we have went for Haaland as well. But again, यार, Gabriel Jesus का work rate, Gabriel Jesus की track backing is probably the best, and Guardiola has said it that it's one of the best in the whole world. yeah, guys. Before my internet again conks off, I wanted to ask Nidhi and Pranay, both of y'all. Nidhi, do you think Pep could have done the job that Klopp has done at Liverpool? And Pranay, do
Do you think I it's got the the same? I I got the got the question. same. So I'll Yeah. answer first. Yeah. No. And it is not an indictment on Pep Guardiola. जो मैंने पहले बोला ना कि Pep wants very specific players. वो लिवरपूल में under FSG is not possible, right? You have to look for. So for example, if Klopp would have, for example, loved, let's say, a Harry Kane, बट हम अब सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह के ट्रांसफर्स, राइट? एंड नॉट, दिस इज नॉट a statement saying Klopp wants Harry Kane, बट मैं एक प्रोफाइल ऑफ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई थिंक दैट यू नो Pep would get frustrated at a club like Liverpool purely because of the the financial structure around it, because we cannot um, spend money at will. मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट लाइक ओके गो आउट एंड बाई दैट प्लेयर, दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल साला को, if it was any other club, no, this question of paying Salah whatever amount of wages that we paid would have been absolutely easy. It would have been a very easy discussion. But because it is Liverpool and we like to keep things under check so much, I think a manager like Pep or even Mourinho gets frustrated at a club like Liverpool. So that's my answer. Again, not saying that there is Pep Of खराब course. है या उसमें या inferior है, but ये structure Pep को suit नहीं करेगा मेरे हिसाब से. What do you think, hypothetically speaking, Klopp at City? I think whatever Klopp it's about. ऐसा बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि कोई अगर जैसे स्मॉल क्लब या फिर एक मिड टेबल क्लब से अगर कोई मैनेजर आता है जो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, देयर आर वेरी रेयर एग्जांपल्स कि वो किसी बड़े क्लब में जाके भी अच्छा परफॉर्म करे बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट दैट क्लब हैज. Right. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिंस एक मेंटालिटी वाली भी बात होती है. Klopp is someone who likes to be very underdog, like unke statements, unke he likes to be he likes Liverpool to be like an underdog ki hum will keep it everything under the check. I will do everything to make it happen, just make it happen. And एक fighting spirit वाली जो होती है, which again Right. वो चीज गार्डियोला में भी है, not saying it in otherwise, but I think uh again it's a very like superficial question. तो मैं आई थिंक अगर इसका एक डायरेक्ट आंसर मैं दूं तो आई थिंक क्लॉप वुड हैव प्रॉब्ली डन इट बिकॉज ही हैज डन विद द बजट, बट इट्स नॉट कि just because he has done it with very small amount of budgets he can replicate that with City. Because with City also जैसे इससे पहले हमारे City से पहले Pellegrini भी था, Pellegrini also didn't like to spend much. He didn't like to spend much, ठीक है. But again at a club like City जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है और आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, even to keep that pressure is very challenging. And when Pellegrini came in, it is not like Pellegrini came ऐसे ही, he also had us, like we all know how, like he's one of my favorite managers, अभी भी very respectable guy. I just respect, मेरे लिए जो एक चीज निकलती है Pellegrini के लिए वो सिर्फ respect निकलती है. But again, did he actually, like I just somehow feel कि he didn't handle एक होता है ना कि एक बोझ होता है एक क्लब का कि मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए अगर कोई था तो आई थिंक दैट इज समवन लाइक पेप गार्डियोला हु कैन डू इट. सो इट्स नॉट, आई डोंट कंप्लीटली अग्री टू दिस पॉइंट कि अगर क्लॉप हैज डन इट एट लिवरपूल he could have done the same thing at Man City as well, and the otherwise as well. Like मेरे को पेप का भी मेरे को ऐसा कंफर्म मैं नहीं बोल सकता कि कि अगर वो लिवरपूल पे अगर होता तो he would have tried to replicate the same thing. मैंने कुछ सुना नहीं है अभी, बट मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ. मेरा जो यूएसबी कॉर्ड इतना फक्ड अप है, मैं लिटरली अभी ऐसे पकड़ के बैठ के बात कर रहा हूँ ताकि मेरा कैमरा, my hand is on the USB like right now and I'm talking so that it doesn't get disconnected. Nidhi, can you paraphrase what Pranay said, because I know what you had to say. Pranay ने क्या बोला? So Pranay is saying that in terms of building a club, essentially, and Pranay, correct me if I'm wrong. Yeah. He is basically saying that in terms of number one, building the club,
Pep has done that as well, and I agree with that. He is saying that perhaps Klopp would have done it at City, but basically उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पेप ने डेवलप नहीं किया है और पेप ने एक आइडेंटिटी नहीं दी है, जो कि सच है यार. सी फ्रैंकली पेप को ना बहुत ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना पेप को बहुत easily dismiss कर देते हैं. A lot of Liverpool fans do that as well. But you have to remember what this guy has done in Spain, in Germany, and a lot yeah. of other leagues where he's changed the way. For example, even in Barcelona, अगर स्पेन की particularly बात Spain, करें तो he didn't, it's all about situations, ठीक है. City अब अब I'm not saying कि यार कि सिर्फ कि क्लॉप अगर आता है he would have कि वो एकदम फोड़ डालता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. एंड आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ पेलिग्रीनी इन दैट टर्म्स कि पेलिग्रीनी विद सो मच एक्सपीरियंस ही वाज स्टिल प्लेइंग मैंचीनी स्क्वाड. अगर आप स्क्वाड उठा के देख लो, इट वाज ऑल अ मैंचीनी स्क्वाड दैट ही प्लेड, वेरी फ्यू साइनिंग्स दैट ही मेड. एंड उस मामले में आई थिंक जब लास्ट सीजन जो उसका था, वी बेयरली मेड इट टू यूसीएल. we came fourth and I think 1 या 2 पॉइंट से ही हम बचे थे सिर्फ. We would have been playing यूरोपा जब पेप आता तो I think I'm just saying कि it's not about the mentality कि ठीक है, it's about get where you're born. अब कोई ज्यादा अगर किसी के पास ज्यादा अगर रिसोर्सेज हैं तो he is using those resources. It's fair to say कि ठीक है, but एक परसेप्शन बस ये लोगों का ये रहता है कि नहीं यार, किसी ने अगर कम पैसों में कर लिया तो वो तो ज्यादा पैसों में तो कर ही लेगा. आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट. मैं डेविल्स एडवोकेट इधर होने वाला हूँ. मल्टीपल टाइम्स पेप ने बोला है कि winning the league is far more tougher and greater and a bigger accomplishment, which I agree. Okay, which I genuinely wholeheartedly agree. As a Liverpool supporter, मैंने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार देखा है, और जो पेप ने अकॉम्प्लिश किया है लास्ट 5 साल में, 4 बार जीता है, विच इज रिडिकुलस इन द प्रीमियर लीग. मैं ये भी बोल रहा हूँ, इट इज रिडिकुलस व्हाट ही इज डन. बट डू यू थिंक डीप डाउन एज अ सिटी फैन, एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एज पेप क्या सोच रहेगा, बट एज अ सिटी फैन, do you think there is, of course there is something which needs to be achieved because he was got to win the Champions League. If hypothetically Pep decides, okay, this is his last year and he doesn't renew his contract and he doesn't win the Champions League, what will you think of his tenure? And okay, if he wins the league again this year, then 5 and 6 is crazy. But if he doesn't win the league this year and he doesn't win the Champions League this year, hypothetically he doesn't win the Champions League, तो देखो, तू समझ रहा है ना where I'm getting at? Because see, एक चीज होती है कि चलो ठीक है, ट्रॉफीज जीतना इज अ थिंग, ठीक है, आई कंप्लीटली गेट इट. इट्स बॉटम लाइन इज विनिंग ट्रॉफीज, ठीक है, ब्रिंगिंग सिल्वरवेयर टू द क्लब. मेरी उंगली इतनी दर्द हो रही है ना ब्रो, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा. उसके नीचे कुछ रख दे ना, बुक कुछ रख दे. जुगाड़ू मेनेस इन द मॉन्क एडिशन ब्रो. सॉरी, इधर हम मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहे हैं और इधर हम लोग यूएसबी पकड़ के बैठे हैं. सॉरी, देख गया. I mean, see, first of all, तो I don't think so कि we won't win the league this season. I'm very much convinced कि हम इस साल भी लीग जीतने वाले हैं. Given whatever. Champions League, of course, that is a dream that still awaits. अब उसका रीजन क्या है मेरे को भी नहीं पता यार. I think I अगर मेरे से personally पूछो तो it's the African curse. अब वो अफ्रीका का curse. It can't be bad luck every year. It cannot be bad luck every year. But it is. Like, how are we losing, games that we are certainly, just फिनिश लाइन पे आके कैसे तुम, मतलब फिनिश लाइन भी तुम पहुंच चुके हो, उस पे भी तुम कैसे वो कर सकते हो. सो इट इज अ बैड लक. आई मीन पिछले 4 सीजन का भी अगर मैं निकाल लूं, बट प्रणय वैसे तो फिर मतलब आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट. वैसे तो फिर हम लोग भी बोल देना कि डेविल्स एडवोकेट. आई नो योर आर्गुमेंट, आई नो. अगर अब वही है ना, इट्स नॉट अबाउट, फुटबॉल इज नॉट अबाउट इफ्स. अगर इफ में तो फिर बहुत सारी चीजें इफ हो जाती हैं, ठीक है. आई कंप्लीटली एग्री कि मतलब वैसे तो फिर हम भी लीग में बोल देंगे बैड लक. एवर्टन हैंडबॉल मिल जाता तो हम लीग जीत जाते ना. ये तो प्योर बैड लक है.
नहीं, बट मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट सेइंग लीग के अलावा भी, इफ आई एम सेइंग चैंपियंस लीग की अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ पिछले 4 सीजन, इट वाज हम्म, प्योर बैड लक. बी इट रियल मैड्रिड वाला गेम, ठीक है, वी 89th मिनट तक, मतलब वी ऑलमोस्ट वन दैट. स्टर्लिंग VAR गोल रूल्ड ऑफसाइड, उसमें भी लॉरेंटे, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, वो सारी चीजें हैं. बट इवन लाइक आई सेड कि लाइक मैं उस चीज पे स्टैंड करता हूँ कि we are playing good football, so I back my manager 100% into that. It's as simple as that. अगर टीम नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही होती, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, then of course I would have been seeing the same thing जैसे आज यूनाइटेड फैंस या बाकी 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 फैन बेस करता है अपने मैनेजर्स के साथ. But when you're performing, like when I can see that my club is performing well, I've never seen my club play bad. ठीक है, there are few bad luck चीजें जो हमारे साथ हुई. इसका मतलब ये नहीं है ना कि आई डोंट परफॉर्म, सॉरी, कि इसका मतलब है कि आई डोंट बिलीव इन पेप, या फिर ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, या जो भी चीजें हैं. तो उस वे में अगर मैं बोलूं तो लेट्स 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 से, आई मीन बहुत सारे यहाँ पे चीजें होंगी कि यार बॉटल करना होता है, ठीक है, आई आई कंप्लीटली एग्री यार, ठीक है, हमने बॉटल किया है, देयर इज नो डिनाइंग टू दैट, ठीक है, वी बॉटल दैट. बट वी डिडंट, अगर कोई मेरे को आके ये बोल रहा है स्ट्रीम में कि भाई it City played bad in that game, then I just don't buy it. ठीक है, there will be a lot of opinions कि हाँ रियल शायद मैड्रिड, नो नो, City who खराब can खेली, but I don't feel City played bad in that game. We were the we were Real we were Madrid the game, better. हाँ, the Real the Madrid Real, game. हाँ, who can say Yeah, City played badly yeah. यार, वो कैसे बोल देगा कोई. हाँ, so नहीं, I mean बहुत सारे लोग, अब it's opinions, right? अब बहुत सारे लोग शायद इस चीज को बोले कि भाई नहीं दे, जैसे बॉटल करने के ऊपर है कि I think it's bad luck. I didn't see कि I believe it's a bottle. Like we didn't bottle at all. It was purely bad luck for us. Yeah, I personally feel that whatever happens from now till Pep's tenure, and if he doesn't win the Champions League, if he hypothetically, there is no possible way that anyone says anything against Pep. What that man has accomplished Yeah, is remarkable. but कोई कुछ भी, Manas, और मैं ये, हाँ निधि, I'll take, because मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इधर, बट आई जस्ट वांट टू गिव माय ओपिनियन. कोई कुछ भी बोल दे, बैड लक नहीं, जो भी, बट जो पेप ने किया है प्रीमियर लीग में, द वे सिटी प्ले, व्हाट इज अकॉम्प्लिश्ड, I don't like him because of him we have not won the leagues that we could have had. But that doesn't, you can dislike someone and still respect them. Mera sirf ye dislike because he is the obviously, manager of City. If he was the manager of Liverpool, we would be singing songs of him. Reality यही है. Yeah. निधि तू कुछ पूछ रहा था. हाँ, मैं बोल रहा था, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो there was one conversation about the league. Now Pranay says that he is convinced that City are going to win the league again. Ooh, okay. Which you asked na कि मतलब if Pep doesn't win, Yeah, let's say Champions League or League, yeah. I'm pretty much convinced that we're gonna win the league this season as well. मतलब मेरे को Okay. I'm pretty sure. You gave your reasons. I didn't. No, I didn't give it. Like I believe it, man. Like it's not about reason. I mean, we are the better team, man. Believe तो मतलब ये तो we are. I mean, we are the better team. अच्छा concept है bro. we are the better team, man, and we have proven it since okay. जब से Pep आया. तो I think there is absolutely उस चीज को define करने का मेरे पास कोई वो नहीं है. There's proof कि हम जीत ही रहे हैं. तो इस साल भी हम जीतेंगे ही जीतेंगे. मेरे को सिर्फ एक चीज मालूम है क्या लग रहा है कि if you guys have lost Jesus, you guys have lost Sterling apparently. If you lose Ake, which is someone who can slot in when someone is injured, and if you lose Bernardo Silva as well, okay, if that happens, which we won't, but still, okay, if that doesn't happen, then yeah, I think City are there because क्या होता है ना, if too much of a core leaves na, it becomes a huge issue. I agree to that. I agree to that. मेरे को see Haaland, man, great signing. He is Erling Haaland, bro. But उसका है इंजरी का थोड़ा स्ट्रेस. I know, yeah. अल्वारेज मैंने कभी देखा नहीं है. कैल्विन फिलिप्स मैंने देखा है. He's gonna be backup है. 7 on 8 on 10 whenever he's required, which is great.
which I think, and Pep will make him a better player as well. But अगर आप बर्नार्डो सिल्वा भी लूज करते हो तो थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है. But मैं सिर्फ लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा प्रणय कि we have addressed a few issues. We didn't beat Tottenham, Chelsea, and City in the league. We didn't lose to them either. One of the reasons is someone being at the right place at the right time. We've addressed that in Darwin Núñez. Someone trying to create something, make something happen, that is Fabio Carvalho. हमने ये दो चीज एड्रेस की है मेरे हिसाब से. अब जूड बेलिंगम तो पब्लिक बोलेगी, अब I don't want to get into Jude Bellingham at all, whether we need वो to sign दूसरा him स्ट्रीम, midfield or not. वो दूसरे स्ट्रीम का टॉपिक है यार. But मेरा पॉइंट है कि there were certain issues मेरे हिसाब से which we needed to address. See, आपको एक पॉइंट का डेफिसिट टर्न करना है अगर आप ऑन पेपर देखो. सो मेरे हिसाब से डार्विन न्यूनेज एंड दिस गाय फाबियो कार्वालियो डू दैट एक पॉइंट का. बट अगर हालैंड फिट रहेगा तो यू माइट गेट व्हाट 100 कितने पॉइंट अलाउड कितने पॉइंट्स आप जीत सकते हो 118 आई डोंट नो 114 is the maximum. Yeah, you might end up getting maximum. maximum points, bro. So Yeah. I think both teams have addressed the issues, and Nidhi, it only makes it better, right? Both teams are confident heading into the season. I think we're going to be better this season, and Pranay thinks that City will win, so it makes for a great season, bro. No, see, we will be better this season. I have zero doubt about that, right? Because I think last season एक बहुत बड़ी चीज थी कि fatigue हुआ था towards the end of the, and if you saw, we were trudging along towards the last few games in the season, in the league. जैसे एस्टन विला के साथ हम थोड़ा मुश्किल हुई जीतने में वगैरह. I think that this season, last season कैसा था कि we were very far off, 14 points का difference था. Then we covered that up. City responded well. I think this is who wins. I don't know, but this season थोड़ा neck to neck होने वाला है. This is what I feel. Who will win? Anybody's guess. I don't think. I don't think. मैंने ये नहीं कहीं पे भी mention करा कि it's gonna be very comfortable win for City at all. Absolutely no chance in hell. It's gonna be a. But you are confident, right? You are confident. I am confident that we're gonna pull through. Like we're gonna pull it up. Like चाहे वो 1 point हो, चाहे वो 2 point हो, चाहे वो same point हो और हम GD पे निकाल लें because we have done it before. I just feel that, of course, I just feel that City will probably edge it this season as well. मानस का devices are giving trouble as always. तो एक आध questions ले लेते हैं यार. सारे लिवरपूल फैंस एंटी हो गए यार यहाँ पे तो. अरे guys, relax man. It's देखो यार, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लिख रहा है, देखो यार, प्रणय मैन सिटी फैन है, ठीक है. अब वो तो नहीं बोलेगा ना जो आप सुनना चाहते हो. Of course. ठीक है. It's a Liverpool fan channel. हाँ, ये कोई तो बोल रहा है होली गॉड्स जीसस एंड मोहम्मद कोट. अरे भाई, काहे को रिलीजियस बना रहे हो यार. नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, देखो वो सिटी फैन है, वो ही विल पुट पॉइंट्स. डू यू वांट हिम टू कम एंड से कि नहीं ही शुड लिवरपूल ही जीतेगा या फिर वैसा नहीं हो सकता है ना. तो आप आए हो, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिबेट ना. अदरवाइज तो हम किसी लिवरपूल फैन को बैठा के बुला लेते, वो फिर हम मतलब आपस में ही हम बोलते कि नहीं, हम तो आपस में ही राजा हैं. वैसा नहीं है ना. तो थोड़ा सुनो यार, थोड़ा मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. Anurag, first of all, thank you for the super chat. He says, don't you think if Liverpool given equal money like City, then Liverpool will achieve far more than City? Pranay, मैं पहले इसका आंसर दे देता हूँ. अनुराग देख यार, प्योरली स्पेंडिंग मनी की जहां तक बात है ना, तो हमने किया है पैसा स्पेंड एंड वी हैव सीन द एडवांटेज ऑफ इट. Obviously, I'll not be deluded enough, and we are not going to say, I'm not going to say things like we've been anywhere close to what City spent.
That's the reality. But I feel that Klopp का एक स्टाइल है where he likes a particular spend, and FSG जो है ना, वो उसको जब भी वो पैसा मांगता है, he is given that money. Just spending money is not guarantee that you will win more. There are a lot of clubs. United try to do that, yaar. Yeah. United try to do that. Yes, PSG ने पैसा काफी spend किया है, but they have not been able to win the UCL. Juventus have spent a lot of money. They have not been able to win the UCL, right? So सिर्फ पैसा देख, obviously थोड़ा फायदा होता, obviously I'm not going to deny, obviously थोड़ा फायदा होता, but I don't think it was a bang on guarantee that Liverpool would have achieved far more than City. What do you think, Pranay? I completely agree with whatever you said, yeah. I completely agree. People say that just because City has money, that's how they win. I don't completely agree to that, because अगर finances निकाल लो तो I think 50 या 60 million का ही difference होगा जितना United ने spend किया है पिछले 10 सालों में, अगर आप लगा लो तो 50 and 100 million max to max, ठीक है. So it does not guarantee you winning something just because you have spent money. एंड अगेन यार, अगर मैं जस्ट अगर सिर्फ गार्डियोला की बात करूं तो अगेन वी हैव प्लेड वेल अंडर हिम. जब भी हम उसके साथ उसके अंडर खेले, वी हैव प्लेड गुड, एंड व्हाटएवर द साइनिंग्स आल्सो दैट ही हैज मेड, ही नोज दैट उस साइनिंग के साथ उसको क्या करना है. लाइक देयर इज अ वेरी क्लियर आइडिया कि अगर मैं ग्रिलिश ला रहा हूँ 100 मिलियन के लिए, तो उसके साथ मेरे को क्या करना है. ऑल्दो इट डिडंट वर्क आउट इन द फर्स्ट सीजन, बट ही नोज देयर इज अ bigger plan, bigger picture for Grealish at the end. Same with Haaland. He's not an out एकदम typical वो Guardiola का striker नहीं है. He's not a very Guardiola likes players like. ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ है ना. Both Klopp and Pep have got players who are strikers अचानक से. By the way, guys, हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं. आप अगर क्वेश्चन पूछोगे, we will definitely take it. मैं प्रणय से ये नहीं पूछने वाला हूं कि तू ऑयल मनी के पहले कहां था, ठीक है. those are not questions, ठीक है. तो अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं जरूर लूंगा. Sadiq bhai is here. Sadiq bhai, do you want to come on? Honest, I'll take Sadiq bhai on. He's Please a nail United it, because my camera is more unpredictable than anyone. More unpredictable than Pep Guardiola का FPL picks. जो लोग FPL खेलते हैं वो बोलते हैं ना, Guardiola बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार, गड़बड़ कर देता है. पेप रूल है डूड. मैं खेलता हूँ, मैं खुद सिटी से सिर्फ केडी भी लेता हूँ, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं लेता मैं. मैंने सुना है, मैं तो खेलता नहीं हूँ. But हाँ यार देखो, that's my Pranay, sorry, before my internet goes off again or my camera, Pranay, how ironic would it be hypothetically if Liverpool signed Jude Bellingham and Manchester City के स्टेडियम में ना hey Jude, like, but I don't. Why would it be ironic? For multiple reasons, right? Why? मतलब if we signed Jude Bellingham, first of all, Beatles का गाना, okay, जो है लिवरपूल के, और जूड बेलिंगम हमने साइन किया, और सिटी में ना हे जूड का get what I'm trying to say नहीं थी. Pranay, you get what I'm trying to say, right? मस्ती में पूछ रहा हूँ, but कितना फनी होगा ना bro. I don't, but लिवरपूल ने तो बोल दिया ना, they are not doing any business इसके बाद. नहीं होगा. जूड बेलिंगम आई कहाँ रहा है. But I mean, even I think there is he's under radar of a lot of top 4 clubs के, तो सभी के अंडर में तो radar में है ही वो. I mean, जिस प्लेयर की जर्सी रिटायर हो जाए यार, at such a young age, उसका तो मतलब next level. Sadiq bhai is here. Sadiq bhai is here. What's up? अरे एक मिनट. I feel my mouse is in my daughter's hand, तो वो मैं लेके आता हूँ, एक मिनट. वो वहीं से क्लिक कर रही है भाई, म्यूट कर रही है. Sadiq bhai, how are you doing, bro? I'm fine. How are you? All good. So हम लोग सिर्फ पेप और क्लॉप की बात कर रहे हैं, मैन सिटी और लिवरपूल की बात कर रहे हैं. सादिक भाई, just your 2 cents about this modern day rivalry of Pep versus Klopp. Why, it's a brilliant rivalry. मतलब managerial rivalries have always been the beauty of the game.
up since I've been watching it. मतलब I was actually watching my first proper season of watching PL was when Wenger came in 96-97. Wow, okay. You're that old, So Sadiq bhai? no, I'm 36, but I was watching since the age of 10. काफी Sorry, पुराना sorry. I was रिश्ता है. I तो was अब joking. तो Please carry on, Sadiq आप bhai. इंग्लैंड Yes. मत चले नहीं जाना, मेरा वरना आपको रख लेंगे वो म्यूजियम के अंदर. नहीं, अरे मैं हो आया हूँ मैनचेस्टर सिटी एतिहाद के बगल में है ना वो इंग्लिश फुटबॉल म्यूजियम जो है वर्ल्ड वो यप पूरा यप घूमा है यप. मैं. वो पूरा घूमा उधर कमेंट्री भी दी है. सरप्राइजिंगली मुझे कमेंट्री मिली थी स्टीवन जेरार्ड के गोल पे. मैंने बोला यार हम लोग को और कुछ नहीं मिला करने को. तो सादिक भाई, in advance, ईद मुबारक आपको. अरे थैंक यू हाँ, ईद मुबारक सादिक भाई. थैंक यू. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ तो भाई मैनेजरियल राइवलरीज तो एक्चुअली इज द ब्यूटी ऑफ द गेम. मतलब अगर आप देख लो इन एनी लीग फॉर दैट मैटर, मतलब क्लॉप की राइवलरी विद द बायर्न, मतलब विद पेप डेटिंग टू हिज डेज एट डॉर्टमंड एंड बायर्न म्यूनिख ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अपना, उससे पहले पेप की राइवलरी विद मोरिनियो, देन मोरिनियो अगेंस्ट वेंगर एंड सर एलेक्स वर्सेस वेंगर. उससे पहले चले जाओ तो आपका एवर्टन का कौन सा मैनेजर था अगेंस्ट Kenny Dalglish and उससे पहले I think there was Bill Shankly was before Dalglish or it was Bob Paisley? Bill Shankly वो was the guy who started it all. वो हाँ तो it 50s was में था. Paisley after that. हाँ तो I mean rivalries are part of it and obviously the managerial rivalry it makes it. लेकिन पता है थोड़ा सा क्या है, what makes this rivalry a bit different for me is कि there is a rivalry, there is a urge to beat each other, लेकिन जो bad blood है ना वो इतना सामने नहीं आता है. Maybe now it is deliberate क्योंकि if you see Sir Alex, Mourinho, Wenger, वो तो मतलब अगर आप पिच में रख लो तो एक दूसरे का खून करने के लिए भी रेडी होते थे. It was that kind of a thing. But with Pep and Klopp, I actually like it in the sense that it's a very very competitive rivalry, but they both respect each other. Footballing There is a rivalry. हाँ एक मतलब दोनों का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनको पता है कि यार ये सामने वाला बंदा भी ना मेरी ले सकता है और वो उसको भी पता है कि यार he can also counter me equally. और वो एज अ फुटबॉलिंग फैन वो देखने में मजा आता है, बट ऑब्वियसली एज अ पर्सन ऑन द एब्सोल्यूट अदर साइड ऑफ द राइवलरी एंड व्हेन योर टीम इज कंप्लीटली शिटिंग द बेड एवरी अदर सीजन, तो वो आपको देख के थोड़ा सा वो भी होता है कि यार हम भी इसमें कहीं घुस सकते हैं कि नहीं. यार निधि सादिक निधि भाई, भौमिक बिलाने ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है. इफ यू वांट टू टेक इट. मैं डाल रहा हूँ, वो भी डालता हूँ. हाँ. एक क्वेश्चन मैं सादिक भाई से भी पूछूंगा, बट उसके पहले यार, सो जूड बेलिंगम, आई थिंक, सी सचिन, जूड बेलिंगम इज अ बिग टारगेट ऑफ लिवरपूल, बट जूड बेलिंगम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो द प्राइस विल बी हाई एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्लब्स इन कंपटीशन. डू आई थिंक ही विल साइन फॉर लिवरपूल? आई डोंट नो. Is there a chance that we sign him? Yes, there is a chance that we sign him. But We are इस season, definitely हाँ, interested. हाँ, ये बात yeah. तो है. इस सीजन तो मुझे नहीं लगता है कि हम बेलिंगम को साइन करेंगे. Nidhi, Because finally we can use the Coutinho money, right? To finally sign we can Jude. use that Jude Bellingham, right? तो इस सीजन तो मुझे नहीं लगता हम साइन करने वाले हैं. But हाँ, मतलब I don't know if we will, but we are definitely one of the clubs. Sadiq bhai, before you are talking about this question, right? No, उसके पहले था. Is अच्छा, this the best rivalry types अच्छा, that ठीक you है. probably? we will come to this question, but एक क्वेश्चन मेरे को सादिक भाई से इसके पहले पूछना है. सादिक भाई, Cristiano Ronaldo has not traveled with the squad to Bangkok. Do you think this is the end? Straight up. I तो have been pretty vocal about it on all other channels also कि this is the end and I was expecting it. पर जर्सी तो रिलीज किया उसने, जर्सी रिलीज किया ना अभी यूनाइटेड ने उसके साथ. ये जर्सी तो रिलीज हो जाती है, मतलब ठीक है ना, पैसे भी तो कमाने हैं ना यार, अभी तो है ना हमारे अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाई नॉट डू दैट. सी फॉर मी द रोमांटिसिज्म ऑफ द स्पोर्ट was done back in 1999 2000 when as a 13-year-old I saw, because I'm also a Barca fan. So when I saw Luis Figo 6 months after cursing the Real Madrid badge and cursing the white jersey,
वो रियल मैड्रिड की जर्सी पहन के गोल मार के उसको उसी बैच को जिसको उसने गाली दिया था स्पेनिश में, उसको वो चूम रहा है। तो आई वाज लाइक भाई डन, ये स्पोर्ट है, ये बिजनेस है, काम है, आप एज अ फैन एंजॉय करो, आप एज अ फैन टेक इट एज एंटरटेनमेंट, लेकिन एक हद तक रोमांटिसाइज करो, उसके बाद ना ये धंधा है, गंदा है पर तो धंधा है। It is भाई business. उसके बाद ये धंधा है, फिर It हर is धंधा business. है गंदा। इट इज बिजनेस। It is हाँ It is business. business. मानस, हाँ, भौमिक का क्वेश्चन, इज दिस राइवलरी बेटर देन ऑल Like, प्रीवियस? I want to hear what Pranay and Sadiq bhai and you have to say about this. But मेरा सिर्फ point of view ये है कि ये rivalry has notched quite a few 90 plus points. So on the pitch, what they have delivered is remarkable. So आप मीठे बातें करो या आप किसी को आई में पोक करो या किसी को धक्का दो, आपकी टीम जो लेवल पे परफॉर्म कर रही है ऑन द पिच, when it comes to just performing on the pitch, 90 plus points like 3 times 4 times, it hasn't been done before. Yeah, like these two managers, what they've delivered. So when it comes to just sheer output of just the way they play, the points that they get, the goals that they score, I just feel that this rivalry is right up there. But मैं romanticize कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है राइवलरी सर एलेक्स और वेंगर का, मैंने जो राइवलरी देखा है सर एलेक्स और जोसे मरीनो it was masala, it was blockbuster, it was something totally different, you know, and so it's a very different rivalry. But when it comes to sheer output, I would say it is right up there. I would like to hear what Pranay and Sadiq bhai have to say about that. I already said, I mean, for me, it is like with popcorns, man. I watched this game with popcorns and, you know, and not just game, उससे पहले भी जो 2-3 दिन पहले जो, you know, tabloid वगैरह पे जो news आती हैं हर चीज के ऊपर, it's just pure मसाला every day कि सुबह वही मैंने बोला ना 2 बजे क्लॉप का स्टेटमेंट आता है, पेप की इवनिंग कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले एड्रेस करेगा क्लॉप का क्वेश्चन कि भाई ये चीज ऐसे है, और 2 दिन मतलब मैच के 1 हफ्ते पहले से चालू हो जाएगा और मैच जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा. बट द ब्यूटी ऑफ दिस राइवलरीज, जब मैच खत्म होता है, देन आई हैव ऑलवेज सीन, यू नो, क्लॉप और लेट्स से पेप गोइंग टू ईच अदर एंड हगिंग इट आउट. तो वो दैट इज समथिंग in a rivalry that is very fresh for me, but I enjoy every bit of it. सादिक भाई, व्हाट डू यू से? मैं बोलता हूं एंड में. देखो आई सी के, देखो जब कोई राइवलरी होती है तो यू लुक एट, मतलब आप राइवलरी को अपने पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ लिवरपूल फैन एंड आई मीन Pranay is a City fan, and perhaps in your lifetimes this is the best that your teams have been performing. And when you have a rival at that time, so you will always consider that rivalry to be the best. Matlab, regardless of, I mean, to some extent, yes, Manas is right given the point output, but you also have to factor in the rivalry that previously that we talk about was a 3-way rivalry. It was Jose Mourinho got added to that mix. उसके बाद आपका जो point output है वो naturally कम हो जाएगा क्योंकि there are more teams who are at your level who can beat you. तो उस वजह से थोड़ा point output आपका plus minus हो जाएगा. मतलब 90. Can you guys hear me? Sorry, my camera is on. Yeah, but Sadiq bhai, like I totally agree with you, but आप 3-way rivalry की जो बात कर रहे हो, वो वेंगर, मोरिन्यो और सर एलेक्स, I'm assuming. Yeah. Yes. But when Jose Mourinho arrived, Wenger and Arsenal were not at that caliber or level. Like it was a 2-way rivalry where Wenger was respected and loved, and rightly so. नहीं, लेकिन वो 2 दफा डबल कर चुके थे, once in 97-98 and again in 2000-2001. और उस टाइम पे they were मतलब losing the EPL by barely a point or 2 points. There was a stretch of like 4 seasons where the title was decided by 1 point, including the treble season. treble season आखिरी दिन जीते, उससे पिछला सीजन हम आखिरी दिन हारे, उससे पिछला सीजन आखिरी दिन जीते, उसके बाद वाला सीजन भी आखिरी दिन जीते, and then there were 2 seasons where United then completely dominated. तो but again, as I'm saying ना कि ये rivalry for me is right up there, but for me it to take that slot एक 3-4 साल अगर और चल जाए ना, once it hits that 8-year mark,
8-9 year mark. But it has all the ingredients. The only thing it lacks right now is longevity. जो अभी हम KDB के लिए बोलते हैं ना, और अभी वैन डाइक के लिए भी जो एक चीज आती है दोनों के अगेंस्ट, तो भाई it's only been a 4-5 year stretch for them. So, See, so I'm so sorry because Sadiq bhai, you made such a great point. You mentioned something about three. Do you think, guys, Nidhi, I'll start with. Do you think Antonio Conte will have something to say this season in this rivalry? I think that Conte will had a say last season as well. I think Conte will have he'll have a bigger say this season. They care Conte. I don't think, and again, this is just my opinion. I don't think they are ready to go and challenge for the title yet, because काफी सारे नए players हैं, and it will take some time for these players to gel with each other and everything. But last season bhi, it was Conte that caused City ka first, slip up, right? That's when we had a sniff. Yeah, तो कि हम ये we can go इस for the title. हाँ, और ये सीजन तो मतलब ये सीजन तो उसको उसके खुद के प्लेयर्स मिल गए हैं, तो ऑब्वियसली ही विल हैव अ बिगर से दिस सीजन 100%. बट यार पेपर, ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, अब पिछला जो डिस्कशन, उस पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अबाउट द राइवलरी. I think footballing wise, pure quality wise, it is up there with the best rivalries, because जैसे मानस ने बोला कि 90 plus points इतनी सार, but for this rivalry to become one of the greatest, and as I'm saying this as a Liverpool fan, Klopp has to win a few more leagues. That's what I would say, क्योंकि अभी भी क्या है ना कि it's more of a contest than a rivalry, right? I feel that Klopp will have to, अगर next season हम लोग लीग जीतते हैं या एक और, अगर let's say Klopp wins a couple more, then I would say this is one of the greatest rivalries the world has ever seen. One of, because that is also a matter of personal opinion. But like I said, this rivalry is more of, on the field rather than, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कुछ बोल रहा है, या जैसे मोरिनियो बोलता था स्पेशलिस्ट इन फेलियर, वो सब चीजें नहीं होती है. That's what I feel. Sorry यार मानस, में थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गया. अरे कोई नहीं भाई, हम लोग ऐसा थोड़ी कुछ स्क्रिप्ट फॉलो करें. प्रणय, हाँ सॉरी. आई थिंक मैंने पहले भी आई थिंक बोला ये कि आई थिंक अगर इस लाइक दिस इज द सीजन वेयर स्पर्स एंड देयर ट्रॉफी ड्रॉट. मतलब इस सीजन अगर कॉन्टे पूरे सीजन के एंड तक रहता है, हाँ वो भी एक चीज है. अरे आप प्रणय, लाइट चले गए आपके. प्रणय आ जाएगी. अरे मैनचेस्टर सिटी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये क्या हो रहा है भाई साहब? तेल खत्म हो गया यार, जनरेटर पे डालना पड़ेगा. इट्स बैक. कुआं खुदवा दे सीधा. शेख को फोन किया मैंने. बट वैसे आजकल यहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है. It's because of the signings we are doing, Sadiq bhai. So I was saying कि I think अगर Conte end तक रहता है Spurs के लिए, then I see he's one of my favorite managers because of the style that he plays, the way he plays football. I just love attacking, football. तो एक personal, अब ठीक है, सबका अपना अपना choice होता है. So I love Conte in terms of that, and that's what I'll say कि this is the season I think Spurs will definitely win a trophy if Conte stays till the end of the season. So yeah, that's my take. That's the cat among the pigeons, na? Yeah, so I've said it out. अगर 38 games तक रहता है तो there is a trophy, और final से पहले अगर sack नहीं किया तो भी trophy. अगर final तक पहुंचाने से पहले अगर sack कर दिया तो भी क्या कर पाएगा बेचारा. Sadiq bhai, Conte was someone who was, I mean, I don't know whether there was truth to that, but he was heavily linked with United at one point of time as well. There was definitely there was a link with United before we sacked Ole and then got in Ranieri. वही तो बोलते हैं ना कि Ole basically played a Conte formation to save his job and got Nuno Espirito Santo sacked. वो Tottenham का 3-0 गेम था ना जो हम लोग जीते थे लास्ट सीजन.
तो उसमें he played a back three. He played a proper back three contest style. Yeah. So Sadiq, भाई what do you make of Conte and Tottenham? Because I genuinely think like Richarlison, then Jade Spence, then Perisic. Perisic, then Basuma, and I think one more signing. Kulu sexy. भाई Kulusevski he's got Kulusevski तो लास्ट जनवरी में साइन किया, but I think one नहीं more बट मैं player. बता रहा हूँ कि लाइक इवन मतलब कुलू सन केन इन सबको अगर एक साथ लाइक दे आर टॉटनहम इज अप टू समथिंग वेरी बिग लाइक दे आर अप टू भाई वेरी बिग सादिक भाई दाल में what कुछ Conte काला है क्या? भाई दाल में बहुत कुछ काला है, सफेद भी होने वाला है क्योंकि भाई there is I see a lily white rose coming in between City and Liverpool next season. मतलब तुम दोनों में से कोई एक रिचार्लिसन रिचर्ड एलिसन Richard Allison. रिचर्ड एरिसन भाई वो तो एलिसन एपिक था भाई. Anyway. मानस तो विटनेस भी करा वहां पे यार क्या है ये? आई डोंट नो दिस. क्या है ये रिचर्ड एलिसन? अरे सो रिचार्लिसन यार. ने apparently anyway बाद में it is a meme it's not It's a a meme. it's a meme ओके Yeah, मुझे sorry पता Sadiq नहीं. bhai, please carry on. but Sadiq it's a bhai. true Sorry. story but it's a true story भाई रिचार्लिसन हाँ. तो मतलब he is brilliant भाई at shithousery. खैर मतलब next season I see Spurs finishing second actually. I can't This pick up season. the league. This season. Yeah, the coming season. Because Conte ऐसा मैनेजर है कि उसको जब उसके प्लेयर्स मिल जाते हैं ना, तो we always say कि भाई Klopp can easily mold his team into that us against the world mentality, लेकिन he has that father figure kind of hand on the players. ठीक है, he doesn't let the thing combust. Conte cannot help but let things combust from his days as a player. He's always been that mindset. लेकिन जब उसको अपने प्लेयर्स मिल जाते हैं ना, तो वो 1 से 1.5 सीजन आपको सीज मेंटालिटी में रिजल्ट्स निकाल के दे देता है इन द लीग. That is what Conte can do wherever he has been. So Sadiq bhai, you are saying City will win the league and Tottenham will finish second? Tottenham will finish second. आप लोग दोनों आपस में फोड़ लो एक दूसरे को. अच्छा फिर सादिक भाई टेन हाग क्या करेगा फिर? टेन हाग भाई उसको तो भी अपना सिस्टम बनाना है. मतलब टेन हाग को आप समझ लो जैसे क्लॉप अपने फर्स्ट सीजन में था ना. क्योंकि हमारी टीम का प्रॉब्लम ये चल रहा है. अच्छा ठीक है सादिक भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू. मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा. सिंस वी आर टॉकिंग, दिस लाइव इज अबाउट पेप एंड क्लॉप राइवलरी. अभी जैसे सादिक भाई ने बोला कि जैसे क्लॉप का फर्स्ट सीजन था, जब ओले गनर सोल्जर था, तब भी बोलते थे क्लॉप को जैसा टाइम दिया उतना उसको टाइम दो. जब कॉन्टे आया, स्पर्स को बोला कि उतना टाइम दो, क्लॉप को देखो इतना टाइम दिया. ये हर समय क्लॉप का ही एग्जांपल क्यों दिया जाता है? क्योंकि व्हाट इज द रीजन? देखो why does nobody say कि पेप को जैसे टाइम दिया वैसे उसको टाइम दो? क्लॉप का ही एग्जांपल आप क्यों देते हो? Pep has actually, I mean, Pep ने तो जीत के आया ना इतना सब कुछ. There is already people already know about Barcelona. Klopp won the Bundesliga in a league not with Bayern Munich twice. तो क्लॉप भी बहुत जीत के आया था, ऐसी बात नहीं है. नहीं. प्रॉब्लम यहाँ पे है जिस टीम में वो लोग आए. क्योंकि अगर आप देखो तो सिटी हैड ऑलरेडी 2 लीग्स जीत चुके थे पेप के आने से पहले. 2 लीग्स जीत चुके थे. द प्रॉब्लम वाज कि पेलेग्रिनी could not take them to the next level, and then Mancini also could not take them to the next level. That's what I just said in the stream. And exactly because the place where I live, यहाँ पे भी पता था सबको कि यहाँ के जो I mean the ruling family had an eye on Pep since the Barca days. They said हम पूरा बारसा बना देंगे तुझे. ये जो चिकी बर्गस्टाइन है, he was in the 95-96 era Barcelona teams. Yeah. And surprisingly Pep का substitute वही आता था. हाँ. और पेप का खेलने टाइम पे भी सब्स्टिट्यूट वही आता था. He was the same position as Pep behind him. So they said we will get the whole setup for you, but Pep did not want to go into a similar setup immediately after getting done with Barca. That's why he went to Bayern for a couple of years, and then he transitioned into Man City. लेकिन Pep was coming to a team that had already won, that had the finances behind it, where Pep could, मतलब Pep के पास रोप ज्यादा लंबी थी. क्लॉप जब आया था, आप उस वक्त उठा के ESPN FC सुन लो, आप जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से सुन लो, ऑल द पंडिट्स वेर लाइक ये आप किसको उठा के लेके आओ, ये तो चलेगा ही नहीं इंग्लिश गेम.
And I think उस time पे Liverpool were at the bottom rock. Like I think मेरे जो 2000 I think 8 9 से लेके 16 का जो Liverpool था, that was a very rough. I mean the teams that I see even score sheets of Liverpool, that is like भाई completely different. it was even worse Until than what until United that is one right now. until that one जो season जो Brendan Rodgers वाला था, that is something हाँ where I think वो एक season को अगर हम exclude कर दें, उसके अलावा भाई they were actually I think I would not be amiss here saying that they were even in a worse position than what United is in right now. हाँ, we of were. course हाँ I agree to that. and I agree to that. and there was a history of 25 years where हमने बहुत परेशान किया था इन लोगों को हर तरीके से, जीतते भी थे और फिर इनको चिढ़ाते भी थे. आई मीन वो जो अभी जो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि लिवरपूल फैंस टॉक्सिक हो जाते हैं कभी कभी, मैं कहता हूँ वो जो टॉक्सिक एलिमेंट है ना उस जहर का, वो हमने ही भरा था इनके अंदर 30 साल. तो somewhere we are also to blame. Sadiq bhai, you mentioned something about being in a worse position than Manchester United. Okay, first of all, we were at administration. Yeah, hours away. Exactly. Hours away. Hours away. And second of all, we had spent 3, 4, 5 years on the bounce not in the Champions League. Manchester Exactly. United का एक season without Champions League is so monumental. भाई You हल्ला know, मच जाता है. even in the midst of all this, Manchester United have spent money. Manchester United finished second one season under Ole Gunnar Solskjaer. Ole, Sure, yeah. it was 15-20 points behind Manchester City, but they नहीं, finished second. absolutely. That is, so to compare where Liverpool was and Manchester United was, you could say for the good or for the bad, it is way different. Liverpool was More different. Yeah. मतलब Liverpool was absolutely. struggling to a different level where we could get docked like 15 odd points, and when Klopp came in, we were 8th. Roy Hodgson, after winning against Bolton away, said that this is one of the historic away wins of Liverpool's history. भाई Roy Hodgson was a manager. He said Yeah. that it wouldn't be, Liverpool is not too big to get relegated. Like we have जॉर्डन seen both- आइव जब क्लॉप आया था तो जॉर्डन आइव वाज लेजिट वन ऑफ आवर स्टार्टर्स. हाँ, Right. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब it was so bad and that team he evolved within what 4 seasons. exactly. और आपको पहले सीजन में नजर आना शुरू हो गया था कि भाई he is implementing something. The problem is he has half the personnel, he doesn't have the other half. और बाद में पता चला कि he didn't even have half the personnel, वो आधे भी जो थे वो उनको उस तरीके से खिलवा रहा था. तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है फुटबॉल टीम में? टैलेंट से भी ज्यादा आपके पास सिस्टम होना चाहिए. अगर आपके पास सिस्टम है ना, तो जो चेल्सी लास्ट सीजन थी उनके 5 स्टार्टर्स वो यूवेंटस के गेम के आसपास इंजर्ड हो गए, आउट हो गए, चिलवेल चला गया, जेम्स चला गया, कांटे चला गया, लुकाकू चला गया. दे लॉस्ट देयर स्टार्टर्स, ठीक है ना. पर चेल्सी कभी भी उस सीजन में किसी भी गेम में बारिंग दैट वन ब्रेंटफोर्ड वाला गेम पिटी नहीं, जैसे यूनाइटेड के साथ हुआ. लाइक वी केम इनटू दैट लिवरपूल गेम, वी वर हैमर्ड, वी वेंट इनटू द सिटी, 2-0 वाज प्रोबब्ली वर्स देन द 4-1 इन माय ओपिनियन फ्रॉम व्हाट आई सॉ ऑन द पिच. तो जब आपके पास सिस्टम होता है ना, तो भले आपके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप यूनाइटेड के टॉप 15 देख लो जो आपकी सिलेक्शन करते थे आप जिन प्लेयर्स की, 10 out of those players I can count on my fingers कि भाई they had probably some of their best seasons, two seasons running, they had some of their best performances, and last year they had their worst season ever. Harry Maguire is the case in point. जो लोग बोलते हैं कि Harry Maguire is a very good center back, 2020-21 season जो था, stats and by eye test, he was genuinely a top 5 center back in the Premier League. But last season he was absolutely dog shit. उसके साथ लूक शॉ सेम इशू, रैशफोर्ड सेम इशू, मार्शल सेम, मतलब आई कैन कीप ऑन काउंटिंग. तो जब आपकी टीम पूरी इतनी बुरी खेलती है, सब आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपके पास सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, आपके पास एक प्लेइंग आइडेंटिटी, एक प्लेइंग सिस्टम भी नहीं है, फिर आप गेम्स नहीं बचा सकते. चेल्सी कुड सेव गेम्स बिकॉज दे हैड अ फॉल बैक सिस्टम जो गेम को क्लॉक कर देता है, गेम को बंद कर देता है. तो आप हारते नहीं हो. जब आपके पास सिस्टम भी नहीं है, आपकी आधी से ज्यादा टीम आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, प्रॉब्ली इन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ देयर लाइफ,
फिर आप पिलते हो और आप दबा के पिलते हो, और वही हुआ लास्ट ईयर हमारे साथ। तो इसीलिए एवरीवन गोज टू क्लॉप। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, एवरीवन गोज टू क्लॉप क्योंकि क्लॉप केम टू अ, आई मीन आई विल नॉट बी सेइंग came to a near hopeless situation. Klopp came into a near hopeless situation and turned it completely around. मतलब 180 डिग्री पूरा टर्न हो गया आप लोगों का within 4 seasons. तो इसलिए everyone gives the example of Klopp क्योंकि वो इतनी difficult situation को आके change किया. Pep came into a relatively stable situation. So there is acceptance of that, right? Klopp did a harder job. In terms of turnaround, yes. No Pranay doubt. Pranay could since we are talking about that, could Pep have done that at Liverpool? I mean, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर I don't think so Pep would have come there. आता ही नहीं वो. विजन ही नहीं है यार, जब किसी चीज का विजन ही नहीं है, अगर किसी चीज का तुम्हारा, लाइक सादिक भाई मेंशन की एक प्रोजेक्ट होना चाहिए ना. Like Pep came into City because of the project. No, एक but vision Pranay, होता है. don't get me wrong. Like Klopp will not take up a job with no project or no future in sight, right? Like he is Jurgen Klopp, who's won 2 Bundesliga titles with Borussia Dortmund, reached the Champions League final, lost against Bayern Munich for sure. But like we can't demean Jurgen Klopp's achievements by saying कि वो आता ही नहीं because कुछ project नहीं, ही of नहीं है, course, कुछ I'm future ही not नहीं है. demeaning Project definitely था. It was just a very tough job. Very few managers would have, taken up that challenge. Klopp is one of them. That's how I see it. As someone who's also a Barca fan and supporter, many Speaking people of forget Barca, this. by the way, Sadiq bhai, speaking of Barca, Langley to Spurs is हाँ वो तो डन है, इसीलिए तो क्रिस्टियन और official कैसी हो वो, हाँ नहीं, इसीलिए तो फिर क्रिस्टियन और कैसी को हमने रजिस्टर कर सके ना, क्योंकि 7 मिलियन हट गया ना हमारी बुक पे से. हाँ. Sorry, Pranay, you were saying. नहीं, I completed it. I think Sadiq bhai was saying something. अच्छा, Yeah. I think what people tend to forget कि क्लॉप बोल रहा हूँ, पेप जब 2008 में जब उसको बारसा लाया गया था, तो वो जो लोगों का एक रोमांटिसिज्म है विद रोनाल्डिनियो बारसा टीम्स, वो 2 सीजन से लीग नहीं जीते थे. बैक टू बैक लीग्स रियल जीती थी, and we were eliminated in the Champions League also pretty early. So when Pep was brought into that setup, imagine वो आया था अपने माइंडसेट से, और उसने आके, लपोटा was the president at that time also, उसने लपोटा को यही बोला था कि मुझे रोनाल्डिनियो नहीं चाहिए, मुझे डेको नहीं चाहिए, मुझे राफा मार्केज नहीं चाहिए, मुझे याया टूरे बाद में उसने आके बोला मुझे नहीं चाहिए. And these people were the spine of a team that had won 2 La Ligas on the bounce after finishing वो जो हमारा एक stretch था 4th 6th का. At the turn of the century, Barca had a stretch of 4th 6th in the La Liga. उसके बाद the man who turned around was Frank Rijkaard, and that spine of the team was Ronaldinho, Rafa Marquez, Yaya Toure, Deco. उसने बोला मुझे नहीं चाहिए. 1 महीना हुआ था उसका आए हुए. He came in May, last month में निकाला. We as fans were livid कि you are giving the reins to a 19-year-old Argentinian, and with him you have Iniesta and Xavi, और आप करोगे क्या? But then he also had that mindset कि अगर आप मुझे मेरा reign दे दो to do things, and again बारसा में भी he didn't buy players like random. वो तो academy system उनका वैसा है कि वो it keeps churning out talent. Yeah. La Masia keeps turning out talent. उसने डेविड विया पे एक सीजन, वो हर सीजन एक साइनिंग करता था, या तो एक सीजन डेविड विया लाया, इब्राहिमोविच लाया, मतलब बैकलाइन और डिफेंस तो वो, मतलब बैकलाइन और मिडफील्ड तो वो अपनी ला मासिया से ही बना लेता था. वो करते minus Dani Alves. Yeah. डैनी एल्वेस तो पिछली रेजिम में आ गया था. डैनी एल्वेस क्लॉप के पेप के आने से पहले आ गया था, 2007 में आ गया था वो. अच्छा ओके. तो उसको डैनी एल्वेस उसने इनहेरिट किया था फ्रॉम द प्रीवियस रेजिम. लेकिन वही बात है ना, तो he could do all those things as well given if he was interested in doing that. Pranay, we've been speaking for almost 1.5 hours now. मैं भी थक गया हूँ, तू भी थक गया, I'm sure. But Pranay, taking Manchester City to the next level, I just want to ask you one more question before I call it a night. How can Manchester City go to the next level? Is there a next level? Is there a gear which we have not seen?
of Manchester City. देख, अगर आइडियली तो सिर्फ ट्रॉफी है which is the Champions League, ठीक है, मतलब ऑन पेपर तो वही है, बट तेरे को क्या लगता है कि what can we expect? Because निधि ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि दोनों क्लॉप और पेप ने we've signed strikers, you know, like something which we haven't seen in the recent past. So what can we expect? What can we expect from City this season? What is the next step? What is the next gear? What should we expect? I think अगर हालैंड आए तो ही I am expecting a lot of goals, man. Already 100 तो हम मारते हैं, अब 150 मार देंगे शायद. तो वो तो एक चीज है, बट आई थिंक नेक्स्ट लेवल की बात करें तो ये सीजन कुड बी अ वेरी मच इवन मोर, ये आई थिंक, एंड ये ना मेरे को थोड़ा बहुत डेजा वू टाइप की फीलिंग आ रही है, क्योंकि लास्ट सीजन भी मैंने ये चीज बोली थी कि लास्ट सीजन भी हमने थोड़े ऐसे साइनिंग्स, मतलब लास्ट सीजन इतने साइनिंग नहीं करे थे, बट जो इस सीजन की हमारी साइनिंग्स हुई हैं, ठीक है, आई थिंक पेप इज गोना गो ऑल आउट इन दिस सीजन. मतलब मेरे को जहां तक एक जो Is this फीलिंग his last season? I mean, if he extends the contract, ना, if he, I think 2023 तक तो है शायद, 2023 हाँ, तक so तो one more है. year, no? Yeah. So, तो he is going all out for it for sure. He is gonna go all out. अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो कुछ ऐसे प्लेयर्स, जैसे अब हालैंड की फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हालैंड इज नॉट अगेन अ वेरी टिपिकल गार्डियोला प्लेयर, बट ऑफ कोर्स नाउ वी हैव गॉट हिम, तो आई एम श्योर कि गार्डियोला हैज अ प्लान इन माइंड फॉर हिम. बट लेट्स सी यार. आई थिंक मेरे वॉइस एको हो रही है थोड़ी सी, है ना? नहीं, मैनेजेबल है. अच्छा, ओके. हाँ, so that is the only thing. I think Guardiola will probably go all out in this season, and that is the only next level we are gonna see. एक दो साइनिंग्स अगर हम और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आके की चीज आती है, दैट इज अ वेरी वरीसम थिंग फॉर मी. आई होप वी होल्ड हिम टू आवर वेरी एंड. सेम विद बर्नार्डो, which I don't feel कि हम बर्नार्डो, we are selling Bernardo at any cost for this, but I think this is the season which Guardiola will probably go all out on. So that is the next level that I feel. But Pranay, hasn't he gone all out every fucking season, bro? Like, has there been a season where Pep hasn't got all out? I'm not just talking about the Yeah. signings. I'm talking about every game that you could like. And I have so much respect. Bhai, koi bhi team ho samne, that man is so animated all the time, bro. Like, so what do you mean he's going all out? Like, because I don't understand when he's going all out. No, I mean, see, in terms of even new experiments, अगर हम बात करें, जैसे अगेन मैं अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन अगर सिटी का अगर हम बात करें, तो देयर वर फ्यू गेम्स ऐसे पर्टिकुलर जहां पे मेरे को लगा कि इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल पेप दैट इज प्लेइंग, ही इज एक्सपेरिमेंटिंग. तो उस वे में अगर मैं बोलूं तो आई थिंक इट्स मोर एक्सपेरिमेंट नाउ. देर आर फ्यू प्लेयर्स अगेन जिसको हमने जो इस सीजन हमारे साथ अब नहीं है, फॉर एग्जांपल हिसो स्टर्लिंग, हु आर लाइक राइटली निधि भाई मेंशन की अगर एक कोर तुम्हारी टीम का क्लब प्लेयर्स होते हैं, तो फिर अगर वो चले जाते हैं तो थोड़ा एक इम्बैलेंस आता है. But I still think कि Guardiola has a plan in place. And when I say all out, I think it's the recent signings that we are doing in the market. थोड़ी सी हम स्क्वाड डेप्थ भी अब उस हिसाब से बिल्ड कर रहे हैं. बीट फिलिप्स की अगर हम बात करें, बीट हालैंड की बात करें, बीट अल्वारेस की बात करें, तो उस वे में अगर मैं बात करूं तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा. एंड अगेन स्टेटमेंट साइनिंग्स दोनों ने ही कर ली है, जैसे लिवरपूल ने भी कर ली है, अब गार्डियोला ने भी कर लिया, हर टीम ही कर रही है एक स्टेटमेंट साइनिंग. बट वही है कि उसको कितना आप मैक्सिम आउट कर सकते हो. आई थिंक दैट इज वेयर गार्डियोला हैज डन बेटर देन ऑल द मैनेजर्स. बीट जो भी उसके प्लेयर्स वो लेकर आए, he has always taken out the best out of them. So इस सीजन आई थिंक इट्स गोना बी द सेम थिंग. अगर हालैंड को अगर उसने फुल पोटेंशियल पे अगर हमने खिला दिया ब्रो, तो मतलब दैट इज द नेक्स्ट लेवल, दैट इज इट इज गोना गो. सादिक भाई, आप लोग ने तो एरिक टेन हैग को साइन कर लिया, बट ऐसे लग रहा है आपको आयैक्स को ही साइन कर लेना चाहिए था अभी. नहीं, देखो बात ये है कि ये नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन कमिंग आउट, बट इसका आंसर ये है कि अगर आप फ्रॉम हिस्ट्री अगर आप मैनेजर्स देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्सेन वेंगर, व्हेन वेंगर केम इन, सब कहते थे उसने आधी फ्रेंच टीम साइन कर ली है. जब आप आ जाओ उसके बाद आगे आता था मोरिनियो में, ही ब्रॉट इन हाफ ऑफ हिज पोर्टो स्क्वाड इनटू चेल्सी इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. उसके बाद आप आ जाओ पेप और क्लॉप पे. पेप की साइनिंग्स देखो, मेजॉरिटी आर
from the Latin मतलब या from the Iberian area या Latin, या तो वो ब्राजीलियन लाएगा एक आध, या वो पोर्चुगीज स्पेनिश लाएगा, the area where he has most experience. आप लोग का देख लो, the initial part you guys dominated with players who had a root in Italian and German football. अब जाके you are going towards the Portuguese side क्योंकि Julian Ward आ गया आप लोगों के पास, who has a experience in the Portuguese league also. तो वो तो हर टीम में initially when Sir Alex came in, he went all through the British Peninsula and French area. Roy Keane Irish player था, Ryan Giggs Welsh था, Cantona was from that north of France area की तरफ से. तो every manager has his area of expertise where he has worked in. और फिर उधर से इनिशियली अपने ईयर्स में रिक्रूट करता है और बाद में ही डाइवर्सिफाइज हिमसेल्फ. तो if he's getting everyone from the Dutch league right now, it is because he understands कि भाई it will be easy for him to explain his game style to those players and execute it at a better level as compared to getting players like getting a player who has not played in that style and trying to teach him that style. तो वो एक आपका क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट पीरियड थोड़ा इजी हो जाता है. And speaking about Pep, as someone who has watched Pep play, I started watching Barcelona because of Ronaldo, but I fell in love with Barcelona because of Pep the player. So I will urge the audience, अगर आपको मौका मिले तो पुराने प्लेयर मैचेस देखना. Pep the player to me is better than Pep the manager. अयो, okay. Wow. पता है, people say Sergio Busquets is the best DM, right? In conversation. बुस्केट्स की जो पोजीशन है ना, वो बनी ही पेप के लिए थी. कार्लो एंचेलोटी वेंट टू आंड्रिया पिर्लो इन एसी मिलान एंड पिर्लो वाज बीइंग लॉस्ट एज अ कैम. उसने बोला पिर्लो को उसने समझाया भाई तू एक काम कर, तेरे को तेरी पोजीशन बनानी है ना तो पेप को देख. Pirlo himself said in an interview, I would not have been Andrea Pirlo if I would not have watched Pep Guardiola play. Busquets says Pep Guardiola is my ideal. Xavi says Guardiola is my ideal. Iniesta said Guardiola is my ideal. अगर आपको कभी देखना है ना गेम, तो उससे आपको अंदाजा होता है उस बंदे का माइंड फुटबॉल के लिए कितना वो है. तो फॉर मी, यू नो, एज अ फुटबॉलिंग फैन, आई वुड बी वेरी इंट्रीग्ड टू वॉच व्हाट ही डज विद द हालैंड, क्योंकि पीपल टेंड टू मिस्टेक. वो हालैंड को 6.5 फुट का दानव देख के सोचते इसको बीच में रख देगा, बॉल डालो. नहीं, हालैंड का गेम स्टाइल इज वेरी सिमिलर. आप सैमुअल एटो को 6 फुट 3 इंच का कर दो, यू गेट हालैंड. दैट इज हिज प्ले स्टाइल. हालैंड का जो प्ले स्टाइल है ना, और आई वुड से प्रणय के नेक्स्ट सीजन अगर डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा 18 गोल मारे ना, तो डोंट बी सरप्राइज्ड. क्योंकि I am pretty much confident on that. पर अगर बर्नार्डो सिल्वा 18 गोल बारसा के लिए मारे प्रणय, तो क्या फायदा ना मैन सिटी के लिए. नहीं आ रहा जा ही नहीं रहा वो. पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैंने बोल दिया पैसा नहीं है. मैं मजाक कर रहा हूं. I absolutely trust Laporta. He's a magician when it comes to dealing with these things and setting the team up. But I think this getting Bernardo Silva is a bridge too far even for Laporta to cross. लेकिन अगर वो कर जाता है तो I've got no qualms. Rafinha अभी like Barcelona has too much holes to fill right now. Like सर हमारे चैनल पे बारसा की ज्यादा बात नहीं करो तो बेहतर ही है. नहीं टेंशन नहीं लो. यहाँ से बारसा के लिए पॉजिटिव बात ही निकलेगी, तो स्ट्रेस मत लो. नहीं हम भी anyway, let's not get into it. But this has been a Joda Akbar of a live stream. Thank you, Sadiq bhai. Lord of the Rings. Sadiq bhai, you have just made this stream so knowledgeable and so much better. And Pranay, thank you so much, bhai. It's always a pleasure to have you, Pranay. Like genuinely, for you to do this again for us. I just want to say that हमने प्रणय के साथ ये record किया था, but मेरा camera, as you can see, fucked up even then, and it has fucked up even now. But we've done this. Thank you so much, both of y'all. निधि, सादिक भाई 1 hour 45 minutes almost. निधि, हाँ भाई, क्या बोलना है? सादिक भाई, मैं बोल रहा हूँ सादिक भाई को तो हम लोग दोबारा लेके आएंगे. मैं काफी दिन से सोच रहा था कि सादिक भाई, आज सादिक भाई आ गए तो इंक्लूड कर लिया. यार अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सुपर चैट. योर बेस्ट फ्रेंड इज यूट्यूब. कोई सीडी खरीदने की जरूरत नहीं है. यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है. ओल्ड मैच सीडीज, अभी सीडीज ही नहीं बिकती हैं यार. मतलब आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा. बट यार सादिक भाई को लेके आएंगे बिल्कुल. सादिक भाई,
thank you so much for coming on. Pranay, thank you so much for Thank you for inviting me. Tackle from Behind को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी के अभी करो. कर And क्या रहे हो? हम कर हाँ, क्या रहे हो कर अगर क्या रहे हो? आपने टैकल को हाँ. फ्रॉम बिहाइंड को फॉलो नहीं किया भाई? हाँ, तो क्या कर रहे हो? मतलब YouTube को तो करो ही, बट Instagram को तो बिल्कुल ही मत भूलना फॉलो करने के लिए. मजा आएगा. Sadiq bhai, since Man United, in all honesty, are not going to be involved in the title race, who do you think is going to win the title this season? Sadiq bhai, before we sign off. उन्होंने बोला टॉटनहम सेकंड आ रही है, बाकी डिसाइड कर लो. हाँ तो वही बाकी ना, तुम लोग अपना देख हम लो. तो कर ही लेंगे, बट सादिक भाई का क्या ओपिनियन है यार? यार सिटी इसलिए बोलूंगा क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस विनिंग दैट 21. अरे यार बस इसलिए थोड़ा प्यार ये बढ़ रहा इन्होंने था बोला सादिक है, भाई के लिए, मैं but पूरा 2 सादिक घंटा भाई is रोस्ट also हुआ हूँ saying यहाँ पे. this. मैं जाके एक दो इन्होंने टाटा हाँ करके बोल दिया, मैं 2 घंटा रोस्ट हुआ उस चीज के लिए लिवरपूल बस स्ट्रीम पे. नहीं बस इसीलिए, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नहीं होता तो फिर मैं सोचता ज्यादा, लेकिन इस वक्त इसलिए नहीं सोचा बिकॉज आई एम लाइक देखो सिटी जीत जाए तो स्टिल देयर इज अ डिस्टेंस. हाँ लेकिन नहीं, अरे नहीं अच्छा, दैट रुको, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट सीजन जीत गए ना तो दे विल बिकम द सेकंड क्लब टू थ्री-पीट इन द ईपीएल एरा. अरे बाप रे. अब सादिक भाई टॉटनहम को फर्स्ट कर देंगे. नहीं सेकंड नहीं, अभी फर्स्ट. यार देखो, I still think logically, and Tottenham winning a trophy is not logic. जैसे सादिक भाई अपना अब स्पर्स फैन से गाली पड़वाओगे हमको. बस है किधर, दिखाओ तो सही. भाई देखो, as a intelligent man, a very smart man once said, it's just Spurs, lad. Sadiq bhai, this is being endorsed by Sadiq bhai, okay, not by Menace in the Monk, just letting you guys know. नहीं, मेरे पे देना. देखो अभी अच्छा आप लोग ने आर्सेनल का नाम नहीं लिया, वहां मेरी सही टॉक्सिसिटी निकलती है. नहीं दूसरे स्ट्रीम में Don't even mention Arsenal. वहां पे तो I go into childhood and teenage era of mine. मां अलग होता है. बट यार anyway, I feel it's going नहीं to यार, be बट हाँ, but City takes it. सिटी, यू I आर गोइंग guess विद it. सिटी. थोड़ा सा उनके पास ना इस वक्त टैलेंट लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, अब माइनर स्मिजन मोर. बस यार इस बार लीग जीत जाए यार, मजा आ जाए यार, मतलब. हाँ बस. क्योंकि लीग के लिए ना, Sorry Pranay, I love you and all, but bro, I want Liverpool to I win mean, the league. see, I completely respect that, यार. Like, since I speak to a lot of people say कि यार ये चीज है, it's about acceptance. अब मैं सादिक भाई को ये बोल रहा हूँ यार, you know, उनका भी अपनी तरफ, हर क्लब का एक हर फैन का अपने क्लब की तरफ फेवरेटिज्म तो रहता ही है. You know, अगर आज की स्टेट में अगर यूनाइटेड को लेकर अगर बोले, बट इवन अगर हम बाकी सारी चीजें, सादिक भाई ऑल्सो वांट्स कि यूनाइटेड जीते यार, या उनका क्लब जीते, तो वो फेवरेटिज्म तो वो तो रहेगा ही रहेगा. इवन देयर आर लेस्टर फैंस, बाकी क्लब के फैंस जो चाहते हैं कि यू नो चेल्सी फैंस, बट आप तो वही चीज बोलोगे जो आपको यू नो which you support. So I completely agree and I take that in good you know good faith. And अगर वो चीज नहीं होती तो फिर मजा क्या है यार. अब जैसे अगर एक पॉइंट से अगर हम लीग ना जीते होते, आई वुड हैव नॉट बीन सेलिब्रेटिंग लाइक यू नो लाइक अ बिच. अगर हम एक पॉइंट से ना लास्ट डे पे नहीं जीते होते तो वो भी एक दैट इज लाइक पार्ट ऑफ द गेम एंड वी शुड ऑल एंजॉय इट. ओली वॉटकिंस को मैं ना अपने गुलमोहर गार्डन में बुलाऊंगा, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में, और उसको मैं फिनिशिंग के बारे में थोड़ा खुद सिखाऊंगा कि भाई तूने वो मैनचेस्टर सिटी के गेम में कैसे वो 2 चांस मिस किए मेरे भाई. Anyway, but yes guys, almost nearing 2 hours. Thank you so much Pranay, thank you so much Sadiq bhai. This was one of our favorite and most enjoyable lives. I genuinely mean it. Yeah, I mean, really enjoyed it. We didn't expect it to go this long, but thank you so much everyone for tuning in as well. And this was Menace and the Monk. If you guys haven't subscribed to Tackle From Behind, please do that. Sadiq bhai, do you have a plugin for your channel or your accounts? Sadiq bhai is free agent. I'm a free agent. He's a free agent. Freelancer. सादिक भाई YouTube के अनिल का है.
अनेलका मतलब एक तरफ रियल मैड्रिड एक तरफ आर्सेनल और चेल्सी भी हर तरफ घूमो। हाउ अबाउट माइकल नहीं माइकल ओवन भी तो हो सकता हूँ ना। अरे ओके Michael गाइस, Owen- see you guys, good night, take care, bye bye, thank you so much. चलो बाय बाय, Anelka गुड नाइट। is leaving.